Hei hi AKASHVANI LUNGLEI ni kan program hi frequency modulation megahertz azale pakhat point pakwa changa puan chwani vo in April ni ninga ni ta na kan hun voi ni na kan lo chen ta apuang tu ar lengil na yi control room in charge leram rota sailo kan program ngai thatu te sibai ule tuna chuan kan hun man dan tur duan lok tlang pui kan han puang nge daruka hian chansin thar hindi apuan delhi mi kan la chonga daruk le minit nga a chansin thar vek sap tonga puan delhi mi na chun somang daruk le minit som zai remoi zai pol lerem huna zotlang bial zai pol durtlang pasor bial zai pol tele champhai vengsang bial zai pol te lerem kan ngai thanga daruk le achan via chansin thar mi zo tonga puan aizola mi kan la chongang daruk le minit somli thogrim ti o huna so thing hun nei tu zoram thanga kholai lunga mi komna kan ngai thanga dar sari le minit soma iron hun kan mangve thongang dare ta chansin thar hindi apuan delhi mi kan la chonga dare de minit nga a chansin thar sap tung apuan delhi mi na chun zomang dare de minit soma thalai te hun kan manga dar kwa chak ma hla huna vairokai zai pot lerem kan ngai tha ang dar kwale minit som panga spotlight delhi mi kan la chonga dar kwale achan via thadun hun kan mangang zandar soma parliament question ar delhi mi kan la chonga dar som le chan via voina ta na kan hun voi ni na atopang naktuk April ni thum zirtop ni jing daruka naktuka ta na kan hun voi khatna kan tran lenga daruka chansin thar hindi apuan delhi mi kan la chongang daruk le minit nga a chansin thar vek sap tung apuan delhi mi na chunzom nga daruk le minit som fangdari moi huna mizoram sinot choir longtai not bial zai pol le bungmun ko shan zai pol te tharem kan ngai tha ang daruk le minit somli atukina kala chuam hun kan manga daruk le minit somli panga damle christian na huna Cecilia H Zorin Sangi Tutor School of Nursing Christian Hospital Serko namin mobile phone in no panga hung dan ti sungsang aron soyang jingdar saria kan dar thalang hun kan manga dar sari le minit som panga meche o a zoram chani zai kan ngai tha ang dar sari le achan via chansin tharmi zo tonga puan aizola mi kan la chonga dar sari le minit somli a iron hun kan mangang dar le minit somli so nu le lunglen huna Good Friday collection te kan ngai thanga dar kwa a chansin thar hindi puan delhi mi kan la chongang dar kwale minit nga a chansin thar vek sap tunga puan delhi mi na chunzom nga dar kwale minit soma naktu ka tana kan hun voi khatna atopang ole chu dizong chu kan hun man dan tur don lo kan puan theite chu ani a kan puan tak te kha thil chul bi ka chuan ti dang lam the ni akashwani lunglei daruka hian chansin thar hindi apuan delhi mi kan la chonga daruk le minit nga a chansin thar sap tunga puan delhi mi na chunzomang आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम एशिया में जारी संकट को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून तक सीमा शुल्क में पूर्ण छूट देने का निर्णय किया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य संजय मंगल ने कहा कि यह निर्णय घरेलू उद्योग के लिए महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल इनपुट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने और देश में आपूर्ति स्थिरता बनाए रखने के लिए अस्थायी और लक्षित राहत के तौर पर लिया गया है। This exemption is expected to benefit इस छूट से पेट्रोकेमिकल, कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर निर्भर कई क्षेत्रों को लाभ होगा, जिनमें प्लास्टिक, पैकेजिंग, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, ऑटोमोटिव घटक और अन्य विनिर्माण क्षेत्र शामिल है। इससे इन उद्योगों के अंतिम उत्पादों के उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। relief to consumers of final product. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अग्रिम प्राधिकार या निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु प्राधिकार रखने वाले निर्यातकों को उनके निर्यात प्रतिबद्धताएं पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक 3 महीने की अतिरिक्त समय दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तेजी से बदलती आकांक्षाओं के लिए एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की आवश्यकता है जो न केवल कुशल हो बल्कि नागरिक केंद्रित भी हो। उन्होंने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित करते हुए आज एक वीडियो संदेश में ये बात कही। वर्तमान शासन को नागरिक देवो भव के मंत्र से निर्देशित बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसका स्पष्ट उद्देश्य सार्वजनिक सेवा को अधिक सक्षम, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
राज्यसभा में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इस विधेयक में कुछ कानूनों में संशोधन करके अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उन्हें तर्क संगत बनाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना और जीवन और व्यापार में सुगमता लाना है। लोकसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित सामान्य नियमों को विनियमित करना है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के हरीशचंद्र मीणा ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और उस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि सेवा शर्तों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में स्पष्टता से संगठनात्मक दक्षता और निर्णय क्षमता बढ़ती है तथा देश का सुरक्षा ढांचा सुदृढ़ होता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया है कि संसद आज से स्थगित रहेगी और महिला आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए संसद की कार्यवाही 2 से 3 सप्ताह बाद फिर शुरू होगी। सदन के विधायी कार्य से संबंधित कांग्रेस के जयराम रमेश के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने इस विषय पर 80% से अधिक दलों से परामर्श किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का आह्वान किया। श्री शाह ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी सहित कई भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में कोलकाता में रोड शो किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी हो गई है। उम्मीदवार 9 अप्रैल तक पर्चे भर सकते हैं। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 142 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज असम में कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे कार्बी आंगलोंग में अनुच्छेद 244A लागू करेंगे। कार्बी आंगलोंग जिले के बोकाजान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से कोलकाता में खेला जाएगा। अपने पहले मैच में मिली हार के बाद दोनों टीमों की नजरें प्रतियोगिता की पहली जीत दर्ज करने पर होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is AKASHVANI, the news read by VC Pramod. The government today said that full custom duty exemption will be provided on critical petrochemical products till the 30th of June this year, amid the ongoing crisis in West Asia. Member of the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Sanjay Mangal, informed this while addressing media at the interministerial briefing on recent developments in West Asia in New Delhi today. This measure has been taken as a temporary and targeted relief in order to ensure continued availability of critical petrochemical inputs for domestic industry, reduce cost pressures on downstream sectors, and safeguard supply stability in the country. This exemption is expected to benefit a large number of sectors, which includes plastics, packaging, textiles, pharmaceuticals, chemicals, automotive components, and other manufacturing segments. India today called for ensuring the safety and security of UN peacekeepers. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said that India condemns the recent attacks on UN peacekeepers in UNIFIL and has sought accountability for crimes against peacekeepers. Speaking on the West Asia crisis, Mr. Jaiswal informed that the UK has invited several countries, including India, for talks on the Strait of Hormuz. He added that the Foreign Secretary will be attending the meeting. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that India's rapidly changing aspirations demand a governance model
that is not only efficient but deeply citizen-centric. Mr. Modi stated this in a video message today while addressing the Karm Yogi Sadhana Saptah 2026. आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। अब शासन को सिटीजन सेंट्रिक बनाकर एक नई पहचान दी जा रही है। The Prime Minister highlighted that improving ease of living and quality of life should be the primary focus of governance. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju has informed the Rajya Sabha that the Parliament will be adjourned today and will again meet after 2 to 3 weeks for an important legislation related to women's reservation. Replying to Congress leader Jairam Ramesh's on the legislative business of the House, Mr. Rijiju said the government has consulted with over 80% of parties on the matter. Mr. Rijiju said women's reservation is an issue that should be passed unanimously in Parliament. We have a bounded duty, a commitment which the House has given, the Parliament of India has given to the women of this nation. For us, this is nothing to do with a specific state election. This is a commitment, this is a duty of the House. We have to take it forward because we have certain limitation when we look at the time scale. We have a limited time in hand and we have repeatedly asked the honorable members of the opposition party. Leader of the opposition in the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, demanded an all-party meeting on the matter so that all parties can present their views and move the proposal forward. He said Congress is not against women's reservation. The Andhra Pradesh Reorganisation Amendment Bill 2026 has been passed in the Parliament after Rajya Sabha approved it with the voice vote today. The Lok Sabha had already passed the bill. It accords statutory status to Amravati as the sole capital of Andhra Pradesh. The filing of nomination papers has begun for the second phase of assembly elections in West Bengal with the issuance of notification today. 142 constituencies will go to polls in this phase on the 29th of this month. Senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah today joined a roadshow in Kolkata in support of the party's candidates from Bhawanipur, Rashbihari, Baliganj and Chaurangbi assembly constituencies. Senior BJP leader Amit Shah arrived in Assam this afternoon on a 2-day visit to campaign for NDA candidates ahead of the assembly elections. Addressing a poll rally in the Kaliabor constituency of Nagaon district, Mr. Shah criticized the Congress party for neglecting Assam during its tenure. Addressing a poll rally in Bokajan in Karbi Anglong district, senior Congress leader Rahul Gandhi said the Indian National Congress believes in decentralization of power. And that is the end of this news bulletin. Hei hi Akashvani Lunglei ni kema ni thupoi mo kan han puange April ninga achang hian summer fix point chart thar kan siam don awangin kan program chen khat siam rem ania pathiani zandar sarile minute soma lalpa ifakang group devotional ti chwa ani anga dar sarile minute somli panga a har thar le nan pathian thu soi ti chwa chin ani bokang daifim pathian fakna thlan chu zandar kwali achanwi atagin ti chwa chin ani to ang Nilai ni zandaruk le minute soma fakna rimoi ti chwa ani anga malthan chu dar soma ti chwa chin ani to ang kan program hi Facebook, YouTube, Akashvani Lunglei channel la ngai thak thei ani e Akashvani Lunglei zai rimoi zotlang bia zai polten kanun hi lalpa ti hla anon remang
zan in zai rimoi huna kan ngai thak masak ber kha kanun hi lalpati hlani a aron rem tu te kha zotlang bial zai polte ani durtlang pasor bial zai pote herem kan ngai thave thunga ka ma ashrai ti hla an remang Zong ba sa zel
Kama shwai ti laron rem tu te kha durtlang pastor bial zai polte ani champhai vengsang bial zai potel rem kan ngai ve thunga nang ithiang lim si ti laron remang Yesu nang ithiang lim si swala tu shin fa nang ithiang lim si ti laron rem tu te kha champhai vengsang bial zai polte ani zotlang bial zai polten itwar na chia ti la anon remang
ituar nat zia ti laron rem tu te kha zotlang bia zai polte ani olezan in zai remoi hun kharnan durtlang pastor bia zai polten iswa cross ti la anon remang That's
zan in zai rimoi huna durtlang pastor bia zai pol ti threm kan ngai thak me khi I swa cross si hlani nakin daruk le achan bia chanchin thar mi zo tonga puan aizo le mi kan la chongang Hey AKASHVANI aizolani chanchin thar achiar tu laram sang ralte Mizoram vokpol Sri African swine fever alen shiat aniri lawa khoilai hmuna ero vandoi thil thua thi puinom thung no pangkum klinglo pakhat ne changin police ten heroin hong ni anman zanin hilali suan azir tir te zanbia thanung akil puiza ninga ni thiang limani a ko than sang ten lalpa zanria sakramen an chang hawang Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju an mecha de tana sit hau chungchang ai to turin hapta ni thum nuwa Parliament in khom kauliani ang ati Mizoram vokpol Sri African swine fever alen shiat anari lawa khoilai hmuna ero vandoi thil thua thi puianom thung ASF Sri hian Mizoram chenjil to wangin khoya emachwan alang chhuaw berenti Asian Beti Department ho dota chuan an soya tundin hmuna state pona tanga alo lu lo fin fiana po omri lawani anti AKASHVANI News on a changin Agent Beti Director Dr. Larot Luang Sailo Chuan African swine fever in kumsani somdi pakhat March thaa Mizoram alo chil nuwa kumtin ASF polshia wangin boktam tak thiba ka enga mazat swat ani thina ASF hian Mizoram buwa khwart awangin bokchau de lo sangal enga mazatin an thi pui to ti soin sangal te churam noi cheng an ni a ASF an kai to chuan bokvul tan a hlo om hlet bokani ati heba ka hian kumsani somni paroka ASF lo langle cho state pona tanga bokla lu wang ne lovin Mizoram shik omsan ya alan thua soya tun naya dur tlaga ASF awanga bok thi nem nge te po ashia le ri lo wangin bandoi wanga ngai ani thua soya tun din huna state head oma ASF alen shiat anilo atibok ASF hian kan ram chunga bu khuar to in endemic vok chau ni lo sangal engma zatin an thi pui to a sangal te chu ram hnuaya vakvel an ni awangin ASF an kai to chuan kan vok bul lai tan an hlom em to ani kum sang ni som ni paroka selchip pa ASF Philo Langle po hi state pon atanga voklak lo wang ni lovin Mizoram shik omsa jok wanga lo om ni in alang dutlanga ASF wanga vokthi confirm te po ashi adar lo awangin shileng angai ni lovin sporadic incidents angai ani tun din huna kan state chen Assam Meghalaya Tripura Arunachal le Manipura he sileng hi aum shiat anilo Puan tongin nimin khan all Mizoram Vokbol Association chuan to chwa siamin state pona voklang lu atanga ASF dar ningeya anrin ani thu soin Sri hi adar zelo nan state pona tanga voklang lu an khapti an soya ASF dar zelo nan hian district magistrate 10 state danga tanga voklang lu khamna chwa ma se tun maya serchep district hom chunga boktam tak ASF bangin thien omli a hi poi tak zatani anti Mizoram Universal Healthcare Scheme Max 2.0 chu man tanania Max noya hian online le offline kaltlangin chung ko sing khat sang ni za somni pakhat anin ziak lut to Mizoram Sarkar chon February ni som parok atanga tun thla April ni som parok thleng khian Max 2.0 noya man choi online in zia lu hun honga AKASHVANI News aizol zona changin Max zia lu zati minute tin an pun ber renga voin chundar som pahni le achan ve thleng khan online le offline kaltlangin mi sing khat sang ni za somni pakhat anin ziak lut to ani internet hat lo na khwa zani samrok pakua health sub center ate voin atangin on offline manga inzia lu theina hun honani a inzia lu zani inzia lo hun na top nuwa hriat thei ani chau don ti maksau tu te chuan an soyani Max 2.0 a hian chengsang ni zanga chengsanga le chengsing khatte in zialu thai ani dona
hei hian chung ko katan cheng noi nga hu thleng man choi lova in an kolna huama na thok nget zong chu in zia lu ngai lovin an tel sa a an hlo atangin thatin poisa an tho dona civil pension le ABPMJY golden card hmang te po asan pa in zia lu ngai lovin maksa an tel sa bok la shoi tlonga Akashvani News Aizol Wain Khan Max 2.0 chungchanga sarkar chuan hria te na te chuakin sarkar na thok nget lo le mi puinol pui man choi in ziak lu te chuan Max mang turin Max card an nei masak nge anga ya Max card hi siam hun bitu ko omlova manerem chan dana siam mai thayani CSS GIA pensioner le ABPMJY golden card mangte tanero chuan tunin huna Max card siam angai lo thonga CSS GIA le pensioner tan Max subscription form mangin Max noi enkol na andong thaya ABPMJY chung ko tan golden card mangin Max noi enkol na andong thei ti antu chua chuan antar lang bok no pangkum kinglo pakhat ne na changin heroin hong ni chengwai li sing rukhu police tenan man khazol PS special team chuan min khan champai tlang sama tuisan phai chege ta no pangkum kinglo pakhat ne na changin heroin hong ni an mana heroin hi gram sani somthumarit ni in chengwai li sing rukhu ani a khazol police station a Indian PS Act noi athu boy zia lu ni in dan bo chatui komtling lawani wangin principal magistrate JJB khazol ko ta hlanani khazol PS special team vek yan zan masa kha lir thei pakha chu tuisan phai chege ta endikin lir thei tang hian dan labaram danga tanga laklu forensic grade bomb somni chengnoi riat hu an man bok until money assistant controller legal metrology champai ne na dan anga malak chun zom torin an hlanani Mizoram Sirlai Pol MZP chuan Mizoram State University din tura politics bol loi ron lo nan le Zirlai den an tor lo nan dikle verify takat na la kani theinan mala kan tum Voina MZP General Headquarters Executive Committee meeting a April ni soma MZP Federal Council la chopswa turter relin zirtir tu indai lo na rual khaizo ka semrual ani theinan sa zokin sarkarin malaro seti te Mizoram inner line permit mandan kalphung chu tun aya khauzok le changkang zo kalpui ni theinan MZP in malaro seti te zirna in sanga zonun zemoi in zirtina kalpui ni theinan MZP in malaro seti te tela hengba ka hen Mizoram University in MZU sports abo sai thina tun aya budget atam theina turin MZP in malaro seti te Mizoram Zirlai ten harsana an to thina wangin CUET Center Tamzok Mizoram om theinan palat nero seti le Mizoram College somni pakhaten principal khet an nei theinan atulagin sarkarin malaro seti te thurel turzinga hian an tel bokani Chanchin Thari Akashvani Aizol atanga puanani AR News Aizol YouTube channel All India Radio News Aizol Facebook page newsonair.gov.in te Chanchin Thari ngai thla le chiar the da ani Chanchin Thari naktu zing dar sarila chanvia puan le ani ang Zanin dilali suan azir tir te zanre tan nuwa kel puizan Monday Thursday ni kaushan shang ten lalpa zanre sakramen an chang hawang ninga ni thiang lim ven zan anti Isu Krista mantira om to lo ven puina huni kaushan shangin ursun takin an mangani kan correspondent report ngai tha ang Catholic kaushan chuan ninga ni thiang lim hi ursun takam mangin he huna hian Isuan azir tir ten en zanre nung an kilna Sweet Harin Eucharist Thiang Limba Sai Ani Don Baka Isuan Lau Zirtir Angin Kesil Rongbol na hun an mangdona he huna hian pui thiam te chuan kaushan sunga changa mi som pani than chwa te chu ke an sil sakdona he hian Isuan mangai na le in ngai tloma zirtir ka entir na le tivetura ati na chunzom na ania Bishop Most Reverend Stephen Rotwang chuan St. Francis Xavier's Parish Longlei aman pui dona ni Presbyterian Kaushan pui pa te chuan twal chung kaushan shang lalpa zanra sacrament an che pui dona Synod Moderator Reverend John Raldo sang chuan Zonam East Kaushan aman puyang Mizoram Baptist Church BCM chuan zan in hian lalpa zanra sacrament an che dona BCM General Secretary Reverend Lalthamon chuan zan in hian BCM Bazar Veng Biak in Lungleia lalpa zanra abat sayang United Pentecostal Church of Northeast India po in zan in hian sacrament ankil haudona Pastor Tirko Kaushan upaten kesil rongbol na kaushan member ten hina an nei china UPC Northeast India Superintendent Pulel Du sang chuan zan in hian bungkon kaushan sacrament akil pui dona ni
Monday Thursday hi caution ten iswa Krista cross ken bia sampha Good Friday ser na hun inchana angaya pathian nikalta iswalal anga Jerusalem khopuya alu nia changkan cholkar thiang lim manchan ani Valerami AKASHVANI News Aizol. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju and Parliament.com kan lai chu boina tiam chen om labati top aninga amero chu me che de tana si thau chung changai to turin hapani thum nuwa inkhom kaule ani angati he thui boin Rajya Sabha inkhom Congress member Jairam Ramesh zona achana soin Purijiju chuan me che de tana si thau chung changa hian sarkar chuan political party za somria chuang aderon to atia heti chung hian Epipolian der Congress chuan sarkar chu assembly in than nei zo Parliament.com kaule turangin na ziakin an thenani ati sarkar chuan hemi chung changi amadu thule tha ati ang ringota kalpui lovin party le MP zongjong ngai dan lang ma sakadu ti po soin me chede tana seat hau chung cha chu parliament da lungrol ta pa chani turani ati bok chanchin ti top na na tlang pui Mizoram Avakpur Shri African Swine Fever Alen Shiat Aniri Lava Khoilai Muna Ero Van Doi Thil Thua Thi Puyanam Thung No Pangkum Kinglo Pakhat Ne na Changin Police Ten Heroin Hong Ni Anman Zanin Hilali Suan Azir Tir Te Zanria Nung Akil Pui Za Ninga Ni Thiang Himani A Kaushan Shang Shang Ten Lalpa Zanria Sakramenan Chang Hawang Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju and Mechade Tana Seat Hau Chung Chang Ai Tua Turin Haptani Thum Nuwa Parliament Inkhom Kauliani Ang Ati Chuti Zong Chu Chanchin Thar Kan Puan Thei Chu Ani He hi AKASHVANI Lunglei ni thogram te Ogisan Vani Thogram te Ogisan Vani hun kan lau thleng le ta kan program ngai thatu te chebai ule zanina hian zoram thanga khulai lunga mi so thing hun nei tu kan palai na komna kan ngai thadon ani he thogram te Ogisan Vani program he Ministry of Agriculture and Farmers Welfare sponsor ani ilawai thang ngai thatu te chebai ule he tu na hian zoram thanga khulai lung so thing huan siam tu komna hun thatak mai kan nei do na sa in ka pu chebai le inti gen kau chen che不知道我的名字啊，你知道吧？不知道我的名字哦。你不知道我所听完，你所听完你出家的，谈你唔听家的，不跟老师咪谈，你不讲不老的，出家的不咋咁多，个的确咪啊，你所听完，你看到做不你老没听，你所听完你那的，你那造中的，回来啊，你夸张的啦，em的，个咪人学乜 support 的，乜 support 啦。kan so thing hun nei hun ni a ni ram kan nei ho ve ve ni ma ni ram po kan nei la ko ni che kong so kilometer zone kilometer riat te ve la nia che kong pel khoda ya son mun kha chu ni so ta son ni pakal kan ni mo so ta son quintal zong hian quintal som panga rất cần chi anh đi chứ, thì chuyện là khó lại luôn hay anh in, là thiệt giàu lắm thế, chứ ta chuyện in mi ram bốc cái này nha, ta chuyện tụi này xuân quên ta là, riết quá xấu về cần chi ngang à, thì chuyện muốn nhẹ, chân này à, bằng về, khai em có là phát tặng đó, hết tiệt chi cần xem, bò ra bếp tiệt ai hiện bếp sủng nga bò về. Rất tốt là cả ngày. Cô bỏ háo tạc thầm đó là nít chứ thế rồi. Khóc mấy. Thọc thầy ra nghiệm chung chung quả. Chung quả thọc thầy cái mà cái này mấy à? Cần phát thêm hôn tăng ăn mà cần nụ bánh cần hôm mà cần nụ hi thiên bùi đỏ tè xia mà. Là mình thọc bùi vắc lọ thì chuyện thọc phát thế cần là tiền xưa nên cần in la malo chang ve thung de mo drai no lo fa man tur te lo tu ka ni be mai ani chu ma ni chan han thora khan ni lo kha chu tiang za chu te ro ani le eng ti kum ve la chang nge bulin chan san ni pa ni hian kan in ne ya
gan in ne tra hin kan ching ta chara kan na tha lo so thing hi ti chuan thlai dang he kan ching ngai lo thu ka ni a that na thuru kin shani do char kan ching kan chin na chan po hi ma son na kong zo tur hian in sum pa hi nga sum la ro nei a ki puya kan nei lo chuan hen bu ti vel le sum chang lo chi hi chu kan ti ngai vak lo nè bu te po thar mot mai la a chom me tur kha leina tur kha ngai to le tho ngai thin pak sa turon chu hun lai chuan in so thing chút nóng mà đi nga han ti tak tak chu in la tam vak lo em an om ve thawa atang pui thuin kholai lunga chuan ke ni anga regular ching pe hian om lovin ka ria kan nei that kum te kan nei chet kum te oma tun ma deuh khan kan nei that hian in a ret lam hi niama ram na thalawa chuan an a hri that lo kum kan nga vak lo kuma a ret lam tha si te po ui ve du thin om nya chu tianga chuan in kan van nei tok lo thina amaro chu mi chuan in ching thei berin ka ria so thing in miram bin ti thina chu kan ka chau da na dia phum chu chen ching to chang khat lian zet so thing kan hem ba pui ta chang khat lian zet chu kan ching in khwa hian in fu ten ching na sa ni kholai lung phe chuin bing than na kha fu kur tai tui zia te mo zo ram kho ve la chan lar em fu wai pui lo so thing in wai pui tlat mai chu ege a that big riau na thurok ten shani lo mo so thing hi shalna om hi ki chuan ol samani ti hian ka han chawa phur chuangai phur chuan a hlalu tu kan ni lo phei chuan kan han chaw chuak hi beka kan khunga kan shal me paisa kan tel thei ngal zela ol sambi ke me heng fu han ta chu kan han chinga kan han thlawa kum khatna kan her mo mal lawa kan her pon hei tlem a tha zo ya lo ma lo nga tiro ti chuan kan hera her na chuan so na tur thing to la ka lo nga ya ti khan an ur kang le ve ka asula lam kha tam bi ka chu chen so thing hi ol sam e ma tin fu han nei tur chuan khol te a her na tur te dang khamai kha tam khop mai tiro sa lo nei lok te ngai chu chen so thing hi thla lo chin zel hi kan duwa kan chin ta zela kumin te po tam tak chuan en sarkar hi an ring tok lo dewa chin te pon tui te chiam lova kholai lunga po kan chin tam lo kholai lunga hian tu na hian ni chu chin tam ber chuin ni deu zel em ber hi kan ni deu tlan puya kholai lunga hian ni chu chuan kumin po hen a tam ber chu kan ni mela thar tam ber point ni bokem ni ve deu thine tlang pui thu chuan in thar in seng nu bera kuin ta leng zat ngi in seng the nung ber ni kuma khan som ko le panga vel kan sat chuaka ti chuan a bak chu kuin ta som ni panga vel chu kan ching ani chu ani tu na hian re thi a zia ve deuem man deu hlek a kha chon zia ve lo mo nge re tu na re ma khan som ni som thum ma kai khan kan lo me ma chuanin sang ni som ni le sang ni som pariat velem mi ta khan som sari bor kha rum kai chho thu ta chumi kum chuan ma kuntar som sari vel kan shanan wai nga ve ta kan tel ve ni so thing man chu hlo ma so thing man hi kan tel tam ber ala ni ka sia ve khata la tur hi chuan la hnem tur hi chuan a re ta that ve ta ngai ve shima ngai ve lu tu kang in le lo te point din ve kan tia so thing a changin so thing khi a ki pui ber chuan ya me lo kan din na khi chu nuai nga kan la ma hian mun zo la son kan nu sum dong hian in ram kang hi
wa mu ta chuanin kan wa ching kan wa ching punga ta chuanin kuin ta la za som nga bor vel kan sal ve mo chumi kom chuanin a he ta thawak lo noi thum zet ki kan lei le ni ti chuan a kum le noi nga kum le noi ni noi thum ti chawve ka ti khan kan khol chawve noi som chawve ka kan in khol chawa chuan in sak bol chan lan te chuan kan mang ve mo chu abul ber chu ni mai kan in sak na he pata avan nuam om mani thorim range me in le lo han din chu ti ro ni a lo po kan lo ma tin kan han luak te po khanin mi te kan so ma min lam pui tu te po khan om ve ne wa a lu le mai mi fak te po kan ve nuam kan ti ve khop mai in chang veng veng tu ren ni chu ti ro ani le mo so thing hi chi shan shan te hi om ve a chen chu rim na te u te chen na bak lem lo han lian pe pup ang chi te a ing chi nge in chi na in soi the me em tin tak thadu de u te du bak lo tak tha bak lo te om ve em ka sa thiam che lo kan chin variety hi han ke phel hianin he a chunga dum deuh hi om ta dum vak lo eng om bok ta chuan ama so thing hrim hrim a chang jing le sei khil khel ang chi om le bok ta chung chu chi kan da na zer hianin kan ching pungin kan ti pung lo kwa la to na kan chin hi atlang pui thuin a chang jing deuh chi ang kha ti nge tak chi kha atam beram nia tin koi phela dum ham kan pen chi kha ani ta thing chu tiang chu thing ria kan tiang pa ngai ne po ka ha bi na chen chuan thing lai dum ten tin ka sha thin chu tiang a soi kho sang sang a hian soi dan te pun ang lo nga te ro ang lo thau de wi tiang chu thing pui kan ti mai je lian pui chi kha ni ta chu te chu kan an ching ve thina a that do na chuanin a lian do khop me kut tum tiat don te hi tak bok khaum the that do na tak tak a chu thar cha zet ten ron chak hu lu ka chu no mo ni ka nga chin chi wak lo ni ka nga chuanin ama kha tui dul wang mo ni a tak kha voi che pa le tu ma chu ma chuan chin zui zel cha ka tla ka kan ngai lo de wa kan kha ta ria chu chuan ni kang ba ka ngam lo de ni mo na ma chin de chi ning ka ria ani so thing a chi dang ho chuan ni kang an ngam thau em ngam tho ve a ri tha chuan ni ka nga po hianin ei tu nang thal na chawa po hianin an la hing viau thawa mara chu ni kang na chu ni na em chuan ni sa tur lo wa hi le in phum lo chin lo ro thit that te pa ve ta mo tu na chuan a chi tur po khanang ma ni khan ti khan in ton del vek to ta na a ti ra in bul chan tir khan a chi khwe mi nge in la ke ma ni nu le pa te hi ama lo ching to ni a chu ta tang chuanin kan in ching pung ve ni a te ra bek ni hi chi chuangin kan la mo chu ta tang chuan han in ching ve ti pung ze la ya ti pung ze la a chi ta na chadeu turang te kha chu in da chat nge ka ringa mo ka teng kha a eng hinge a chi tan chadeu a chang chadeu te nge ang chi te a mit tam deu te nge soi dan po ka thiam cha lo zo dan che po a chi tan chuan hetia kan an cho chua a ria po chadeu ti deu ser so fai ser so ang hi kan thang tang puya chu ta chuan he me a mor bok anu a mit zo ka hi a chor chu than zo ka ti chuan a then ni chuan in he me a chi hlui dot chia a ron peng chuak bok te hi hi a ri sel du ten han ti le a ma ro chu a chor chuak hi tha thuma mo chuan pui dan he zir te pon yang chu te ro ma se hei kumin hianin lo kan nei zawa chi kan in dai lo wangin kan du thu sam lo kan da ran to a chi hlui te le enge ma chia ho kha a chor thau kha kan thang le ta ni ti san so tu na san kan cho ma ba ki na chi a chu lai ve kan chi ni chu
tôi nói xong cần sổ thì ở trong đó chả bỏ lên như thấu mẹ chứ vàng cho nó chỉ lục viêu bỏ lồng ngay cái hệ ta hoặc là anh em có lắm vì là xíu đều nghe mà như tôi liền at lang nó lấy lùng tới bỏ hình thì lúc tôi còn xia chặt chuan rama chặt chuan em lâu tin hết anh à thì khác tôi là sang gặp một số cái gì đó tùy lúc tôi khi lâu ngay cái gì anh em lấy lùng nghe nghĩ đều ai chặt cái mà khi chuan lấy tắc băng ngay khi số thiên ở đâu đủ rồi cái gì ha nisa lấy hol hol lúc chú nisa ngầm rồi và chỉ là sợi khăn râu đều tên vui đều tên mà bị cả cho bạn chuan lấy tắc đều sân trung giảm cái thì sân trung lấy lịch hậu thì thì anh ăn tắc đủ rồi cái gì đâu có mỏ số thiên ở đâu rồi nông túi cái để hay ăn một tấm vẹm nồi chấm tiếng ai em nông đều thì chú tam cái thì anh hi ông giặc giặc thế anh thì ôi bằng đều rồi tùy nghe hình thức hối giặc gì cả thế anh là tam đủ rồi đều thế hình kia cái mà ấy cho nên cả hết thiếm là tam trùng trang hi cho cần chính về ta chắc so thiên tam chăn lai hi cả là man phụ chi à là thì tam về chứ là nếu mà tam thọ và tam thôi chuan tam chăn lai à hi khami aram chu anh yang hẳn tỷ tuổi rồi aram non le aram rồi thì về cái bộ hiện xil lo hi cả là man chi à đi lo hình tam em có trùng trang à bộ hiện nên nghe anh nghĩ thì soi thiểm har cái thì cái điểm thì siết viêu hiện đó thì anh sẽ tắm tỉnh này thì hiện cái gì so bang chu yang hẳn tỷ ngót te po khát rồi har lệ tục anh đi lấy mo bi le bi in car anh tia zao về nghe bi car zao zone thì đủ to experience cho anh tiếng về chút to về hẳn tỷ anh te kha in chỉ hết tia cái hẳn sẽ tụt thầu hai in car hi in chỉ song in chỉ riết thì về thì cái đủ to cả mà là chú phải bui tên này nó tì cái này chính là vàng hiên cái mà dính đều hẳn thì hiên chung ai dính cho hẳn xe cả cái mình tì khát đều rồi hẳn tí là hẳn tì khát liền tụi mình bị hết đủ thứ sao mà đặc chứ lâu khó pa mà đi nó tì rồi việc thu không xí lâu thế rồi là bui thuyền bị hết dính lúc tục lâu xe lấy chán mà mua khác số thiên khả nó đi đi về đều thế cái mà bị khả thiên nên là tắc đủ rồi cái gì anh lấy ấy tới bộ này lúc tục khát cho nên anh lâu ấy nó về ngay từ rồi lâu ấy đi về thế đều ram chiang cái mềm lấy chia thế lấy chả đủ số thiên hết chưa ram chẳng ram mà chẳng bao lệ tắc chả đủ này đấy mua anh đi sao mà ngay dính về em vậy thùng hết chưa đang bơi thuyền thảo chuột thì vậy thì thảo hết chưa nên đứa anh cháu con nào lâu nhỉ mà cháu té sớm về mà là chú tắm tắc hết chưa nên vậy thì thảo to lâu nhỉ đều xe đi xa him vấn đề này đúng không đàn nó vậy là lâu về rồi mà xem tuột na chỗ tắc po tắc chả đủ đều do kiến cái riêng lâu thì về ngon tí là tắc chả đủ đều về thảo chuột tăng na số mà lâu nghỉ về cái cột tên lâu rồi về rắn tiếp bộ đoạt tuần xả tiền số tiền choán khai tiếp bộ khác thì thiếu nung về thầu khăn nhà đoạt tuần tiếp bộ lâu xả nhà nghe rồi anh đi mua dù ba tên thì bói về chuyện cho em sợ thì hẳn ấy tu anh nghe tên một tiếng thì không về chuyện em mẹ anh em bóc kia nên dù ba đùa comment po cái này ra đùa nghe cái thấu phải là vợ sao dù hiện anh sẽ mua lần khác mua lần thì mình cùng con đã cùng rừng con chỗ phê chuan ấy phật đẹp được mấy cái sáng mảng lầu do các chú tiền khóc chuan sao dù về thì nói hay là ngăn được cho nên phải
khá bối bộ bể rộng mà sao thì phải chặt chuan bồm tuần này vắt lâu ni mua vắt lâu đấy anh hiếm tăng bối viện sân bát tên ngay em lâu ni mua phải chặt phê chuan được rồi ngay vắt lâu đấy anh nghĩ chú số thiên nghĩ hay in nhàn hay tấm chín không mấy trang trang market chúng trang à thì bọn anh nghĩ anh nghĩ thì market thì anh thì top tiền giáo tôi được cho nên sấy thế đủ ai chọn ở đây thì có hết nhóm thì nhớ sum lụt này là niệm gì là sáng ni cháu về là sum ni về là cần sẵn thấy ăn khá tụi nó sống ngã thì về là cần sẵn ai hiện nên là lọc dọc in cả xem mà anh ấy lúc tụi con cho nên mình tàu đàn ấy mà chứ tiếng ở chỗ cho nên tụi nó sống ngã về thì bang ngay chặt tóc khát ăn về nên cái gì còn là thuộc tụi đây đi tắt cho nên cần gì thế á cần sum lao luôn này thì cần là tháo chua cho nó cần ngủ hiện thì mới đứa ấy cho nên rồi thì rồi sang một đêm chín cho cần tiền này cần đủ sản mà thế cho nên sống ai hiện niệm lâu sẽ là cho nên lâu này mình thế hạ mình thế ăn về mà thọ hạ mình thế bộ có lúc chuộc chia đến là khăn thấu cả số là sao vậy thấu xí nền mà rim về nè đi tắt chân thỉnh thoảng ta thọc tê chứ cần hà nè cần phụ pháp bên mẹ tháo gì nè nó phải chưa tháo lộc chi tan phải chưa nè cho tiền về chưa nè cho bạn chân cần thọ phu hiến sản này chặt tóc trên lâu về bốc in cái gì anh ấy ăn tin hay anh lấy tu thì hàng cần lâu ngắm hoài lâu trên bốc xéo mua mình giờ phê cho rồi anh ấy sản na mình giờ làm xuống á thì khá anh ấy lâu thì bộ cần riêng company làm tiền mua file thì bộ rất là trang tem này về nghe mình giờ làm xuống anh đủ tốt được mấy khỏe anh tiếng anh sử trình cái sản nó lang bùi hết chứ cái chuyện này cho vai sum đo cái nó ăn rồng đo anh hi ni đều lang bùi à ni là lạc là cái chuyện cắn sạt lọc su ni đều mấy à trong su này mấy à cắn sạt đàn muốn nắng hết su cắn tiểu vắc là ni hiền ni muốn bùi là ban phút là về đấy mấy mà rồi sẽ bộc lạc lộ chiều khăn bền hoa đồ này mua đang lại hiền ni vai là chuyện bang ngày ông hiện đều hi anh nắm về đều bốc à chúng ba cả chuan rẻ ta chặt thì chuan hun sẵn nó cho hi nó nón cal về mà anh ngầm hoài hoài thì là khăn nhìn lốp để mấy to nga từ rồi nè cái này coi cần in lom chặt hiện lo so thiên sẵn chúng ta ngay hiện khó đăng ấy chuan anh in lom mà anh chán tì ra hoài hoài thì nó là bốc ta chú tiền chú cần khui cần là cal mũ mal về rồi mà mà nhìn cái này cho sẵn cần đủ không là anh rồi như chúng cần sẵn bốc pin đều mấy anh ngầm hoài hẳn thì bốc hắn cần rong lấy thấy vắt lời anh rồi ngầm bằng khá cần sẵn láng bụi này đều mấy sẵn thấy hun lấy tu lâu ông rem trang khăn ông khát cho anh đi mua chú tí ra chú in hẳn thar ta khoa cho thar tắm bể polin này thì khăn in ăn đầu tia này in đi game tắm bể em đi còn thế khá chọn tắm bể đấy cái tắm bể rồi dâu vắng vậy nè chơi thu so thiên châu thì cần chi nè so thiên mà là anh mà trang chọn hay một ban y đo cần tí để cần trang thạc về bốc à chọn anh này thay ra chi hậu về thế cả là cái này đã bốc á chú này mấy à chú hoàng chọn so thiên ngọt thì nó chú chính bốc cần xin hoạt động triển lãm rồi chú rắm đang ởที่หาโตรัดทักทิ้งเสียเดี๋ยวแค่สิขัดมันที่เฮงไล่เนี่ยนะอินข่าวเทเสียหันเข่งทุยเดี๋ยวเทเสียที่นังบ้านที่จังปนลูกของเนี่ยจบที่ปนหันฉันเทอุลากันติปุยเล่ไม่จู่ๆอย่างเทนี่ที่ปนจุลเข่งมาหน้าเดี๋ยวถอริมน่าจวนนั่นเลยที่ปนเราชินปัทยานิมัลที่ปนเราสวมชินเจ้าที่จวนกันหุ่นที่เราจะdùng mấy xe cho bạn chọn chọn nó không biết tan
so thing en kol dan chung changa ni emo tin so thing market chung chang te poilo soi du te po karinga idu te chuan chung te po chu leng vek ta sera tin kut na tho chung chang te po niang idu tu khatyang I lam hoi kha soi na hun kha kan siam sa kan che chu chu dong ber ni to mai ra se alo mo me ne so thing kan an chin don hena chi kan du to ke kan siam phota chu chu tun ma chuan tia ma sei salovin kan ling mai zela bora kan da kar khatte ai reite ta chuan amit alo ma chu chu kan an ching ta hi thing khan ya tu nai chuanin atam te om ta ka wang hianin atam dan na tur te kan han tia ri lam matang ten ridomil gol an fak thina chu ridomil gol a hianin pek khata hen bom ni oma chumi bom khachu liter som panga tui chuan pek khata chuan liter som thong chumi chuan kan chi ta a chi kan siam kha kan el kia limin apem tharlain kan chi ta ni chu kanan na kar chan ve te kan chi mo kan da chuak le a ti chuan a ho hil no bora te kan khonga ti chuan a mit om no kan chi ta chuan khan voi thom te kan thlawa voi li thlau thei chuan an thlawa hei a hridik lo tam kan ti hi om ve thina chumi chu ke ni chung ko hi chuan kan in kol na sa thing khop me chi sang sang a than ti zong zong hi kan mang thina ni khai ni te hi a than tia ti chuan in sprayer bura tui ne kan cho pola chung te chung kan ka pa chuan hei tui bur mum chi te chung te chu tha tia tin hei thosi lo di ti chu ti ha ka te chu tha tia chuan hei vut ta pa kan vut hi tiang te tha tia soi ve ta zel to ro he chuan hei mei holan ro hian a hulo chuak hi ingtina monian do chuan tuiron tinga afara chu tiang tui te chu than te chu zong chu kan mang thina ni ma se khoi ber nge a that pui ti se tur hian nge kan mang lor na sa thin tu kum khatta ma khan a riat thei tak tak lawa angi ber por riat lawa tin alo tam to chuan atam tak hi kan veng lo win ka ria atam tak hi chu ran deuh zen len ka ria hemi abul vela han ti war deuh khan han ka war deuh khan akal le zel tur hi aveng dewin ka ria he chu kan en kol thin dan ania ni kum khan horti ramatangin training kan neya lawan ram kal chila chuan en kol dan te min zir tira chuan an soi dana chu to na ka soi ang thau khan atam vel chu tak deuh te nan ka pila abul vel te ka war kha a ven na thaber do dan chuan a tam ma ka tur ti khan mai a tam ma hi na pom lao ni chu te ro ti da mai nin ve na tha ti do kha a tam ma lo ven lo kha an du thu sa man ta chu tianga kan ti chuan tam te po siam tu kan nga ya siam khan so thing hi thlai an kol nuam mania are alo om chuan cho chuang ang kha sam nga la ne sum la alo ol sama chu wang chuanin lo nei tu te po hianin han chin war thar zel sela re sarkarin tu anga min boi pui chuan re tha jok te pun kan la sam thei mai theya chu wang chuanin war zokin han chin hlom ta sela ka mo dan chuan thingtlang pa lo nei zong tan chuan in to del la ol sam po tak ni ne ria ki mu che tak ni ne sha ni bo te ro to na la chuan kan ni sela tha kan lom lu to ke lo lo tling zel turin le tun ai tam jok te polo thar zel turin do sak te kan lan cha kan lom lu to ke po la me kan ngai thak ta khazoram thanga khulai lunga mi so thing mun nei tu kan palai na komna ni
he thogram te o kisan wani program hi Ministry of Agriculture and Farmers Welfare sponsor ani zai lawai thang Chuti zong chu zan in thogram te o kisan wani program website kan ngai thak ti thong le ta akashwani lunglei tanga puan chhuani hi akashvani lunglei ni ainon hun kan lo thleng ta a kan hun hi TZ store tena an sponsor ni TZ store a hian agriculture lama mamo tin reng thlai pangpar le thei chi le adam doi ran nung tha na lo chi sang sang le thlai chandu na dam doi chikim kan kole Macedonia building bazar veng le agriculture office basement cha mari lunglei ya te hian jing daria ta changa tlai dar nga thleng pan thei reng kan ni e phone number 9436964107 AKASHVANI LUNGLEI Shatirna Mizoram Polytechnic Lungleia Diploma in Engineering Course Civil Electrical Mechanical Computer Science and Engineering Zirdu Tan March ni som paruka changa April ni som sangni le som ni paruk chunghian entrance exam form fill up thei ani online na fill up thei na chu polytech.lunglei.mizoram.gov.in ani a offline ro chuan principal Mizoram Polytechnic Lungleia jingdar som changa chon nu dar ni chungin submit thei ani e Mizoram Polytechnic Lunglei AKASHVANI LUNGLEI ole zarin airon huna kan lama saber turatan chuan I hlui si lo ti hla kan ngai thla anga he hla hi zo sang lenina moi tak maya atsak ani ole thangtu te kan puang nga langa he hla hi ma biakin All India Radio Lunglei hla thanna number changin aron thlanga tin petera kang mun amin vil hwa ka ti chung kwa kang mun salem venga mi te nangun taka an ngai thla ka ta na than ma moi te zotlang lunglei min wanel so mi sai lo chan mari tu lunglei silal din pui zotlang lunglei ami le mercy lal parliani tlabung zo din ami te ta na than tin vi kung te we sai zo min debi lerin omi aizo ram thar no ta mi le gladys lal shwai tlwangi ral te aizo veng lai ami te ta na ron thlanga zoram lianan ngun takin lo ngai tha se ti in shwaya khiang te ngeng pui tlang ami than chunga chamring amin ma ve ni le ma pui pile rami te nangun taka an ngai thlaga ta na ron thlang bok ani I hlui si lo zo sang le ani
se sui lung tin leng tu mai ka tong le chi kan su lit nu song te fan chang thing lai chang a riang min nem tu reng ka tong si lo sak mel darang ton ni a hel chua le si chi chuan ngất lang thế tangin vang lai đi ta lâu chuain thai thui khiang oi sak mel hayang tarpon nang nen kan tim lai ni hil thei hian ka moi si lo engan kher nge nang nen kan lo in ton si chi sil parang in lui si lo o ka thing lai ru ka ngai che lung run ka ngai ber che ole jan in ainon huna kan ngai thak masak ber kha i hlui si lo ti hla ni a aron satu kha zo sang le ani ni adot le tan cfl ming tanga zai kan ngai thave thunga ma te lo jin vero ti hla ron sa ang athang tu te chu vi ma man si vi ma ma chong te el amin nula si lal chan dami ma te I chong te el amin ngun taka ngai thla ka tan ti in aron thanga ma ki ma moi te a zo tlang lunglei yamin silal than buangi le ke zo than tluangi zo tlang lunglei ami te ta na than tin ngai em karimen hoi shalom van lel veni lunglon lunglei ami tan ti invi kung te na ron thlang boka ke zonun ki ma parvatu yami le david somwan puya harate sate ekamite tan pc jessica kang monami than are sadeng surami tan tin are sathen zolami na ron thlanga tin he laidal nu ifar ko nami tan ti in chunga chamring ami na ron thlang bok ani mate lauzin vero cfl ming thanga
phong an em du đón em sẽ xin chiam đến đi la itu le zua mangai na vang chuan an hiang ngam đón em đi si bu cho hung chua kan sang ko pui moi mu ve turin he lai ma te lo zin ve chak piang ring hia ilung len ve mo isak ve lo min rai choi zen rong ten kan hun no loi an en ning long te it hir bang long e la mang le te hiam ka ring lo te hiam ten đi la itu le zua mangai mate lozin veroti hla moi tak me aron satu kha civil ming thanga ni ainon hun kan mang me ka he hun hi tz store tena an sponsor ani ole dot le tan chon du lai lc ti hla zomwan puin aron sa ang athang tu te chu fb live kal tangin khum te pa chawin aron thanga than sak te hi rj jinet ke lalmuan omi le apuang tu tan ti in miron than saka tin pc zo nun tluangi durtlang le tan ami le caroline le ro sangi tlang nom aizola mi te tan vi kung te we sai zo mi than le than tluanga pau tu le lel thon pe ka zo din tlabung ami te tan ma moi te zo tlang lunglei ami naron thlanga tin je sho te twal te amin lal omoi new champhai mi le julia ti chongtlai mi te tan than tin lal biak zola ru lama min twal puya achian te zong zong tan aron thlanga zo noi zo ma aram thar lunglei amin annu marwa ti le sofi afanu du tak mai sofi te tan aron thlang bok ani du lai lc zomwan pui Song
kan ngai thak ta khadu lai LCT hlania ron satu kha zomwan puyini Akashvani Lunglei nakin dar kwale achan via chadon hun kan manganga dar soma parliament question ardeli mi kan la chongang ole anon hun lo man chun zom ila thangro moya thom ten mi thla alang hlim thla ti laron sa anga thlang tu te chu dinga hnial umin ziri anuni le biak than sangi changte te nangun taka alongai thla ka tan ti in aron thlanga tin ma moi te a zotlang lunglei amin ma honga tlabung bazar veng si ro cham liani zotlang lunglei mi le si lalmal somi tlabung veng chakami te tan aron thlanga PC zonun twangi durtlang leitan ami le Caroline lalro sangi tlang nuam aizol ami le Maria Khiang te zon hnuai lunglei ami detan vi kung te we sai zo ami than GP adeng surami tan ti in are sa thian zolamin aron thlanga tin ma puite nu fa tan ti in hwa kan aron thlang boka nu hlui bazar veng amin anu atunu du tak mai tuang pui bazar veng ami ta na than lalma ma mautlang amin diki mautlang ami ta na ron thlanga ki ma fa nai lungsen sau tamin lungsen le pang zola chian ti zong zong ta na ron thlang bok ani mitla alang lim tha thang ro moya thom te Bin ron tia
sang lo tur chuan ka phal the mol lo che an don ve trin che mo nang ne na kan tiam thu ti silu rual te a kan len dung lai song te mit kha alang hlim tha mai zo kem lo ni mitla alang hlim thla tilron satu kha thangro moya thom te ni hlimten hlanang o ti hla len diki khyang te in aron sanga he hlaron thlang tu te chu FB live kal tangin dir darbi ke in aron thlanga tinlal nun pui nam te zotlang lunglei ami le silal chhuan omi ki kon lunglei ami te tan mamoi te zotlang lunglei mi than ethel thau thang farm veng lunglei ami le lel chapari south bung tlang ami te tan vi kung te wei sai zo min aron thlang boka ke ram lwa puya le ke thamwan zel ngeng pui tlang ami te tan van la shwa khyang te ngeng pui tlang ami than ke van la shwa ya bung tlang south amin rama cham dur tlang amin ngun ta ka ngai tha ka ta na thanga chung te south khole kamin sel thangi kol hok le fa ti zong zong ta na than chunga chamring amin sang hluna khozol ami le lusi khan ko ami te tan he la hi aron thlang bok ani hlimten hlanang o lerin diki khyang te hlimten hlanang o ti hlaron satu kha lerin diki khyang te ani
AKASHVANI LUNGLEI TZ Store a hian agriculture lama mamo tin reng thlai pangpar le theichi le adam doi ran nung thana hlo chi sang sang le thlai chandu na dam doi chikim kan kole Makedonia building bazar veng le agriculture office basement cha mari Lunglei te hian zingdaret le achanwi atanga taidar nga thleng pan thei reng kan ni e phone number 9436964107 ole la than hun lo chun zom ila lalung muanan kar hladi ti hla moi tak mia sakan ngai thadon ani he laron thang tu te chu FB live kal tangin lal RB haw hengin aron thanga tin ma moi te zotlang Lunglei min dal san himat labung veng chak ami le remro te labung bazar veng ami te ta na than tin vi kung te we sai zo amin zai on ram hak moi khomoi Dr. Silarin Sangi assistant professor Hatim Lunglei ami le remro ti ngen te assistant professor Mizoram Christian College Aizo lami te nangun taka an ngai thla ka tan ti inaron thanga sangte champhai veng thlang ami tan chunga cham ring ami than tin te bazar veng amin atho puite zong ta naron thanga JH ro te twal te amin nalbiak zwala rula mami ta na than dainai pai tharami tan tin ke Benjamin Hongbu min hela hi aron thang buk ani karhladi lalung muana
kan ngai thak ta kha kar hledi ti hla ni a aron satu kha lalung muana ani ole dot letan lo ala irem si lo ti hla bi mal som tuangin aron saang helaron thlang tu te chu ma moi te zotlang lunglei amin Jacob atenu para siveng lunglei Joseph leram din puet lobung zodin ami le lalzar zo varal te zo hnuai lunglei ami te ta naron thlanga tin FB live kal tlangin mampuya sia khel hian RJ sarai nangun taka alongai thlaga tan ti in aron thlang boka vi kung te we saizo amin vi darin pui khomoi amin ngun taka alongai thlaga ta na than em lerem tluanga bulia veng amin dalrin omi ze te tami ta na thlanga mai penya lamin dami penya lami ta na than sangte bolia min bolia khwami zongjong te tan hela hi aron thlang bokani lo lai irem si lo bi mal som tluangi What lie see
avan moi vong chin tak em tero zan thai eng nuaya bimal som twangi omoi tak mai han ngai tha khi chu aman hla chin te e lo lai rem si lo ti tharon satu kha bimal som twangi ni ole dot le tan swan lalte ti hla le lian moi pachawin naron sanga helaron thlang tu te chu FB live kal tangin ma lima January naron thanga tin Dr. Lelte pui mine ko alle Grace Dal dampui khatla East Aizona mi te tan vi kung te we sai zo mi than lerem liana zodin tlabung sangming moya tlabung veng chak nelrin moya tlabung chon pui lal fak moya tlabung chon pui mi vek te tan ma moi tia zo tlang lunglei min aron thanga omi le eli luang mo lunglei mi te tan Juliet Sailo luang mo lunglei mi than lalbiak zwala lelren kimi ru lama mi te tan ke lero pui Mizoram Home Guard khozola min aron thang boka lal pari wanseng pui amin aizola achian te zong ta na than din teisai re pami le than pui zo te mi te tan ram te ro pui min hela hi aron thlang bok ani lalte lal lian moya pachwao lalte ti laron satu kha lalian moya pachawani ainon than hun hi ti gestor tenan sponsor ani olekan hadot le tan mangai wangin ti hla mi VL rem puyen haron sanga atlang tu te chu FB live kaltlangin shwaite puk pui amin aron thlanga tin ma moi te zotlang lunglei amin leruat puya tlabung bazar ve ngami le silal swan omi ki kon lunglei ami te ta na than tin zanin FM zo oya duty te English RJ base C lalmun hlui mizo RJ larin Felicite le Hindi RJ larin omit te na ngun takan ngai thaka tan tin vi kung te we sai zo minaron thlanga
tin ruala sanga wamin sia ha a achian te zong zong ta na than dua tali afida te tan ti in zui zuya cha mare min ron thang boka te le hniam pui ro tanga mi te tan sha ta ro tanga min ron thang boka ni mangai wangin mimi VL rem pui mangai wangin tilaron satu kami mi VL rem puye ni olezan in ainon hun kharnan lel rimen thang ti lagan ngai tha anga hela hi eichilal chakiman aron saang ole thang tu de kan puang anga FB live kaltang in also ma marina ron thanga tin RTP asailong hong bu min hong bu a achian te zong zong ta na thang ma moi te azotang lunglei amin si dan mal somi tabung beng sak ami le ke darin yana te nupa tabung beng sak ami ve te tan aron thanga peki joy puinot wana min wat ti le Jeremy te ta na thang tin Robin Junior ngeng puitlang amin cha isir chi pa mi le PC zwali te ta na ron thang mo mani le remain thang eichilal chakima hoi lo pa rem mi thia lung herle turin nun hui to na tlai ko ka lo var le tri dong mang maya chan ka phal si lo hello ten chor thapui en huaya ka mangai che kata ini nin di kha lalne tham mangai na van duai mo chuane kadam zo chuang hei lo nge mi te som vang khodai lam rona
zinin ainon huna kan ngai thak me khi dal rimen thangti hla nia ron satu hi eichi lal thakima ani akashwani lunglei nakin Daria ta chuan hin chansin thar hindi apwan deli mi kan la chonga dare le minute nga a chansin thar vek sap tonga apwan deli mi na chun zamang Don mang maya chan kapal silo hallo den chor thapui ehwaya आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। संसद ने आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा के पश्चात सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। राज्यसभा इसे कल ही पारित कर चुकी है। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक स्पष्टता और सुव्यवस्था प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विभिन्न पदोन्नति समितियों के माध्यम से समय समय पर पदोन्नति सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक सीएपीएफ के समूह ए के अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में विनियमन से संबंधित है। सीएपीएफ के किसी भी वर्ग के अहित में ये नहीं है। गृह राज्य मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। सरकार का कहना है कि विधेयक केंद्रीय सशस्त्र बलों के काडर के प्रबंधन के लिए लाया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा ने सरकार से कहा कि इस विधेयक पर गहन चर्चा और मंथन करने की आवश्यकता है, फिर जो सहमति बने उस आधार पर निर्णय लिया जाए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार ने बलों के अधिकारियों से बात नहीं की है और ये विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद राव राजेंद्र सिंह ने विधेयक को सशस्त्र बलों में अनुशासन लाने वाला और उनका मनोबल बढ़ाने वाला बताया। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीमा पर और आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं और ऐसे बलों के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधेयक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी सांसद ने कहा कि विधेयक अधिकारियों को भरोसा दिलाएगा कि करियर में प्रगति एक विशिष्ट ढांचे के अंतर्गत होगी। जनता दल यूनाइटेड की लवली आनंद ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस विधेयक के कानून बनने से सीएपीएफ का मनोबल ऊंचा रहेगा। सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार सारे बलों में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को लाकर बैठाना चाहती है और इस तरह विपरीत परिस्थितियों में काम करने का अनुभव रखने वाले बलों के अधिकारियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि सरकार सीएपीएफ की कर्मियों की आवाज नहीं सुनना चाहती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस विधेयक को लाने से पहले इन बलों के अधिकारियों से परामर्श नहीं किया जो इस विषय के हितधारक हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नक्सलियों के सफाई का दावा करने के बाद उसने इस विधेयक के माध्यम से केंद्रीय बलों के भविष्य की संभावनाओं का सफाया कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सीआरपीएफ और दूसरे अन्य केंद्रीय बलों के साथ अन्याय किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विष्णु दयाल राम ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और काडर प्रबंधन को बेहतर बनाएगा। तेलुगु देशम पार्टी के कृष्णा प्रसाद तेनेटी ने कहा कि केंद्र सरकार को केंद्रीय बलों में रिक्तियों को भरना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का वादा किया था, जिसे दोनों नेताओं ने पूरा किया है। श्री तेनेटी का कहना था कि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिवसेना उभाटा के संजय देशमुख ने कहा कि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से दूसरे अधिकारी को सीएपीएफ में लाना इन सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ अन्याय है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के मोहिते पाटिल ने दावा किया कि इस विधेयक के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। निर्दलीय सदस्य उमेश भाई पटेल ने विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेजने का आग्रह किया। इससे पहले शून्यकाल में लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए गए। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार के नालंदा में एक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ कर उसे सड़क पर घुमाने का विषय उठाया और कहा कि इस मामले की त्वरित कार्रवाई हो ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। समाजवादी पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा ने शून्यकाल में कहा कि सरकार और निर्वाचन आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव में एक ही मतदाता सूची हो। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की कथित बेअदबी की घटनाओं का विषय उठाया। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में गैंगस्टर और आतंकवादियों के कथित गठजोड़ का विषय उठाया और कहा कि केंद्र को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ अन्य सदस्यों ने भी शून्यकाल में अपने अपने क्षेत्र के और लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य प्रशांत पडोले ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सांसद क्षेत्र विकास निधि एमपीलैड को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की बांसुरी स्वराज ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण एसआईआर के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव किए जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र का दमन है। श्रीमती स्वराज ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि कल पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके में एक बहुत ही संगीन घटना हुई है जहां लोकतंत्र का दमन हुआ है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के लिए जो न्यायिक अधिकारी गए थे उनका घंटों तक तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों ने घेराव किए रखा, खासकर महिला अधिकारियों का। भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए ये टिप्पणी की थी कि कानून व्यवस्था की पूर्ण विफलता है। उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि हम एक स्पष्ट संदेश दें। मैं केंद्र से आग्रह करती हूं कि इस प्रकार की अराजकता पश्चिम बंगाल में हमें स्वीकार नहीं है। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा प्रियंका अरोड़ा से। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा तथा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे कल ही पारित कर चुकी है। इसी के साथ अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने संबंधी विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक दल तेलुगु देशम पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने की दिशा में इस विधेयक को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश विधानसभा में 28 मार्च 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भारत सरकार से राज्य की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की कुछ धाराओं में संशोधन करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि विधेयक में ये उपबंध किया गया है कि निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अमरावती एक नई राजधानी होगी। श्री राय ने सदन को बताया कि राज्य विधानसभा के 28 मार्च 2026 के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती के संबंध में वैधानिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से 2014 के अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसके अनुसार विधेयक के कानून बनने के बाद अमरावती को 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी माना जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ संसद में किए गए वायदों को पूरा किया जाना चाहिए।
चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए नागर विमानन मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी नेता के राममोहन नायडू ने कहा कि भारत के इतिहास में आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास विभाजन के बाद कोई राजधानी नहीं है। श्री नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के शासनकाल में अमरावती को राज्य की राजधानी नहीं बनाने के निर्णय के खिलाफ वहां की महिलाओं ने शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि ये राजधानी कृष्णा नदी के तट पर बनाई जा रही है। श्री नायडू ने कहा कि ये विश्व स्तरीय राजधानी होगी और दुनिया भर के लोग इसमें निवेश करने आएंगे। चर्चा में भाजपा के लक्ष्मण रायागा कृष्णैया, पाका वेंकट सत्यनारायण, बीजू जनता दल के निरंजन बिशी, तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वेंकट सुब्बा रेड्डी, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के आर सुरेश रेड्डी, रविचंद्र वद्दीराजू, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीधा और साना सतीश बाबू, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुदीप कुमार पाठक और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हिस्सा लिया। ज्यादातर सदस्यों ने अपनी बात तेलुगु में रखी। इससे पहले सदन की बैठक शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए गए और फिर शून्यकाल हुआ। शून्यकाल में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बिहार के बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के प्रबंधन का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि इसका नियंत्रण बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाए। उन्होंने गया के हवाई अड्डे का नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखने की मांग भी की तथा इसे सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक भावना से जुड़ा विषय बताया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजलाल ने सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट को खत्म करने या तर्कसंगत बनाने की मांग करते हुए कहा कि ये परीक्षा सिविल सेवाओं में विविधता के रास्ते में बाधा बन रही है। श्री ब्रजलाल ने सरकार से मांग की कि या तो सीसैट को समाप्त किया जाए या इसे इस तरह तर्कसंगत बनाया जाए कि इंजीनियरिंग, विज्ञान, चिकित्सा और कला वर्ग सभी पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान ने कश्मीरी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की। शून्यकाल में ही राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, एमएनएफ सदस्य के विलियम पना, भाजपा के भीम सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी, नबाम रेबिया, महाराजा संजाओबा लेशंबा, आदित्य प्रसाद, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा, कांग्रेस के नीरज डांगी और रेणुका चौधरी ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। सदन में आज प्रश्नकाल के बाद भोजन अवकाश नहीं लिया गया और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा हुई तथा इसे पारित किया गया। इस विधेयक पर चर्चा से पहले संसद में महिला आरक्षण विधेयक लागू करने के लिए लोकसभा में सीटें बढ़ाने के उद्देश्य से एक विधेयक लाने के संकेतों के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को सूचित किया कि सदन की बैठक आज स्थगित होगी और जल्द ही बहुत महत्वपूर्ण विधेयक के लिए पुनः बैठक होगी। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि किसी विधेयक को कब पेश किया जाना है, इसका निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा सरकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर श्री रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा में आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक और जन विश्वास धारा संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए लिया जाएगा। संसद के बजट सत्र के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र के दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है। श्री रिजिजू ने कहा कि हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये विपक्ष के साथ भी साझा किया गया है। अगले 2 से 3 हफ्तों में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाने वाले हैं। आज सरकार सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव रखेगी और हम जल्द ही फिर मिलेंगे। उद्देश्य सदस्यों को ज्ञात है। सरकार महिलाओं के आरक्षण कानून को लागू करने के लिए और लोकसभा की सीटों को 546 से बढ़ाकर 861 करने के उद्देश्य से जनगणना से संबद्ध परिसीमन को अलग करने के लिए 2 विधेयक लाने की खातिर विपक्ष के साथ बातचीत कर रही है।
कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का इरादा सर्वदलीय बैठक बुलाने का है और विपक्ष की मांग है कि ये बैठक 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद बुलाई जाए। इस पर श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार देश की महिलाओं के साथ किए गए वायदे को पूरा करने के लिए बाध्य है। इसके बाद सदन में सदस्यों के विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए और फिर सदन की बैठक 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। This is AKASHVANI, a review of today's Parliament proceedings read by Shagun Chopra. First, from the Lok Sabha, writer is Anjali Ojha of PTI. The Parliament has passed the Central Armed Police Forces General Administration Bill 2026 after the Lok Sabha approved it today with voice vote. Rajya Sabha has already passed the bill. Replying to the debate on the bill, Minister of State Nityanand Rai said the legislation aims to strengthen law and order in this country. He said it would bring administrative clarity in appointments of officials and also address challenges of cadre management. He said it will increase the efficiency and morale of the forces. He accused the opposition of trying to score political points in the debate and said they are trying to create confusion over the bill. Rai said CAPFs have organized command and control structure. He said Sardar Vallabhbhai Patel had imagined a strong administrative framework to maintain India's federal structure. He said CAPFs have expanded and there was a felt need for uniformity in rules, and differing rules across the CAPFs created operational problems. He said a clear umbrella structure is required. He said different laws created ambiguity. He said the new law provides clarity about appointment, promotion and other service conditions. He clarified that the legislation is not against CAPF personnel and said the process for joining CAPFs has been made more inclusive. All the CAPFs, CRPF, BSF, ITBP and SSB are governed by their respective acts. The rules under these acts govern the recruitment and conditions of service of Group A general duty officers and other officers and members in the CAPFs. The CAPF General Administration Bill 2026 provides that for the purposes of appointment of officers from the Indian Police Forces Police Service in CAPFs, 50% of the posts will be filled by deputation in the rank of Inspector General and a minimum of 67% of the posts will be filled by deputation in the rank of Additional Director General. The posts in the ranks of Special Director General and Director General shall be filled by deputation only, it proposes. The proposed legislation comes after the Supreme Court in October last year dismissed the centre's plea seeking a review of its 2025 verdict that directed that IPS officers' deputation in the CAPFs be reduced and asked for a cadre review to be carried out in 6 months. A group of retired CAPF officers have gone to the Supreme Court with a contempt plea against Union Home Secretary for not implementing the Supreme Court's October order in this regard. As the House took up the debate, opposition MPs demanded sending the bill to a parliamentary panel for comprehensive discussion and deliberation. As soon as the bill was taken up for discussion in the House, Maua Moitra of Trinamool Congress moved an amendment seeking to send it to the Select Committee for greater scrutiny. Opposing the bill, Harish Chandramina of Congress demanded that the government send the bill to Joint Parliamentary Committee for comprehensive discussion and deliberation. The bill, in the current form, creates differences between officers and employees, and divisiveness in the armed police forces is not good for the country and internal security, he said. Speaking on the bill, Samajwadi Party MP Dharmendra Yadav too demanded sending the bill to the JPC. He also urged the government to provide the old pension scheme to the CAPFs in line with the defence forces. Yadav questioned the absence of Home Minister Amit Shah in the House. While welcoming the near end of Naxalism, he alleged
that the move to place IPS officers on deputation in the CAPFs will demoralize the forces and weaken their morale. Rao Rajendra Singh of BJP said the proposed legislation will bring clarity and boost the confidence of officials, stressing that forms the core of the CAPF. He said strong morale within the force is key to handling any situation. He maintained that the bill will help ensure discipline and also refer to the deployment of constables with MPs, saying it is often seen as a marker of status and importance. Sanjay Uttam Rao Deshmukh of Shiv Sena UBT alleged that the CAPFs continue to face a large number of vacancies and that many personnel have been denied promotions for years. He added that the move may adversely affect the morale of the forces. Mahua Moitra of TMC said the proposed law seeks to override judicial directions on cadre review and promotions while continuing a system under which senior CAPF posts remain dominated by IPS officers on deputation. A move, she said, undermines the morale and career progression of in-house officers. Sudama Prasad of CPI-ML Liberation said the bill views the CAPFs with suspicion. He said it will demoralize the personnel. Avdesh Prasad of the Samajwadi Party called the bill a symbol of injustice. Earlier, during the 0 hour, BJP MP Basuri Swaraj lashed out at the TMC over the gherao of 7 judicial officers in West Bengal's Malda district during the Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls, and asserted that SIR is not a political exercise but a constitutional necessity. Raising the issue in Lok Sabha, Swaraj said a very serious incident took place yesterday in which democracy was crushed. In West Bengal's Malda area, people belonging to the ruling dispensation of TMC confined judicial officers for hours, especially women officers, he said. She said the Supreme Court has taken cognizance of the matter. It has given the observation that there was a complete breakdown of law and order in West Bengal. I demand from Parliament that a clear message be given. I urge the central government that such anarchy is not acceptable in West Bengal. She said, SIR is not a political exercise but a constitutional necessity, Swaraj asserted. During the 0 hour, Speaker Om Birla cautioned union ministers and MPs against having long conversations in the House when proceedings were underway and warned that he will name them in future. As soon as the 0 hour began at 12 noon, Birla said he has seen members and ministers talking for half an hour with each other during House proceedings and stressed on maintaining the dignity of the House. Soon after the Lok Sabha passed the Central Armed Police Forces General Administration Bill 2026 by voice vote in the evening, the House was adjourned till April 16 amid indications that the government may bring a bill to increase seats in Lok Sabha and state assemblies to implement the women's reservation law. Speaker Om Birla said this morning he received a request from Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju to reconvene the House on April 16 for urgent government business. He said there will be no question hour, 0 hour private members' business when the House reconvenes. And now a review of proceedings in the Rajya Sabha. Writer is Sanjeev Chopra of PTI. Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai, while replying to the over 2-hour debate on the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026, said the Andhra Pradesh Assembly on March 28, 2026, passed a proposal requesting Government of India to grant statutory status to Amravati as the capital of Andhra Pradesh by amending the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. He said the resolution passed by the Assembly requested for amendment in the Act incorporating Amravati as the capital of Andhra Pradesh with effect from June 2, 2024. The minister congratulated the people of Andhra Pradesh with Amravati as the new capital. We hope that Andhra Pradesh touches new heights of development and plays a meaningful role in fulfilling the dream and resolve of Prime Minister Narendra Modi in making Viksit Bharat by 2047, Rai said. He also termed this as a historic occasion.
Speaking on the bill, Sanjay Kumar Jha of JDU said Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu and Bihar Chief Minister Nitish Kumar are the most important and trusted allies of the National Democratic Alliance right from the Atal Bihari Vajpayee-led government to the present Narendra Modi-led regime. Supporting the bill, he said Amravati will emerge as the best capital of the country in the coming years due to the visionary leadership of Chandrababu Naidu. He said Amravati was chosen for its history, location and potential. Masthan Rao Yadav Bidha of the TDP said this bill is not just a legislation, it is a moral promise that our farmers' sacrifices will not be forgotten. The bill restores the dignity, aspiration and pride of the people of Andhra Pradesh, he said, adding that people of the state were left without clarity and without closure. In February 2014, and after a lot of planning, Amravati was chosen for its history, location and potential. We are creating opportunities for the people of Andhra Pradesh, he said. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu, also a TDP MP, called it a very emotional moment for him. He said this redefines the pride, the faith, the consciousness of the country it has on its democracy, on the leadership and the whole political system. He said that when Andhra Pradesh was bifurcated and Telangana was formed in 2014, it was for the first time in history that a new state got a capital and the other one was left out without a capital. He called it a historic day for the entire Telugu community. Congress MP Renuka Chaudhary said the step was delayed and it took 12 years to recognize Amravati as Andhra Pradesh's capital. Sandeep Kumar Pathak, Aam Aadmi Party, also expressed his party's support to it. He, however, stressed that the House must reflect on how petty politics, political incompetence and policy confusion can destroy the nation. Sana Satish Babu of TDP said Amravati is not just the capital, it is the heartbeat of 5 crore people of Andhra Pradesh. Priyanka Chaturvedi of Shiv Sena UBT said, I am happy to make my last speech of this term, Rajya Sabha, in solidarity with the people of Andhra Pradesh, especially the women and farmers of Amravati, for the long-awaited justice they sought from this country. She said, while Telangana was given Hyderabad, a ready, globally recognized city, Andhra Pradesh was given a promise. Today, we are here to put a name to that promise, and while we welcome that, this House must not allow itself to celebrate without also accounting for the long injustice, she said. The Rajya Sabha also passed the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026 with a voice vote. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal replied to a 3-hour discussion on the legislation. The minister said the legislation will help citizens and MSMEs. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. These laws are administered by 23 ministries, including coal, commerce and industry, shipping, urban development and transport. Out of 784, 717 provisions are being amended for decriminalizing minor offences and 67 to facilitate ease of living. Replying to queries and apprehensions raised by various MPs, the minister said comprehensive consultations were held with different government departments, state governments and organizations before bringing the amendments. Refuting suggestions that the Drugs and Cosmetics Act is being diluted through the Jan Vishwas bill, he said the amendment is aimed at only making changes in procedural provisions and compliance. We should not go to jail or court for a small mistake in procedural compliance, Goyal said. Citing examples, he said, if someone sells drugs, stocks them, imports them, manufactures them or distributes them, and if the drugs are not approved by the drug controller, then very strict and severe criminal punishment has been proposed in the law. I believe that there will be no fear in those who make mistakes. There will be fear in those who break the law on purpose. We have tried to bring simplicity by decriminalizing all this, the minister said. We have tried to provide protection through adequate civil mechanisms, and we have tried to bring swift and proportionate penalties. We have tried to bring swift and proportionate penalties, Goyal said.
Several members, including those from the opposition, participated in the discussion. Earlier, when the House convened, several members raised issues of public importance during zero hour. Bharatiya Janata Party MP Brijlal demanded the abolition or rationalization of the Civil Services Aptitude Test CSAT, stating that this examination is acting as a barrier to diversity within the civil services. BJP members Bhim Singh, Sumer Singh Solanki, Aditya Prasad, YSR Congress Party member Subhash Chandra Bose Pilli, NCP Sharad Pawar faction member Fauzia Khan, Shiv Sena member Milind Murli Deora, Congress member Shakti Singh Gohil, Renuka Chaudhary and others also raised issues of public importance during zero hour. That's all in Parliament.
program Western Music tonight, and a big thank you to everyone for keeping up with me till the end of the program. This is your RJ Arlo from Kimi, signing off from AKASHVANI LUNGLEI, broadcasting on FM 101.9 MHz, and I wish everyone to stay safe and have a good night. When the days are weary, oh yes, he cares. I know he cares. His heart is touched with my. Hi AKASHVANI LUNGLEI ni tuna hian sandar kwa nia chak mahla kan ngai thla khun alo nia zanina hian vai ro kai sai po te hlare mi lo ngai thlang u Forever
chu ti zong chu zanin chakma hla huna viral kai zai pol ti hlerem kan ngai thak thei chu ani a akashvani lunglei atanga puan cho ani dar kwale minute som panga a hian spotlight deli mi kan la chongang Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India's expanding global digital trade ties. The participants are Shubhamoy Bhattacharjee, economic analyst, and Diksha Saxena, Akashvani correspondent. Good evening, listeners. Welcome to today's Spotlight. Today, we will be discussing India's expanding global digital trade ties. To delve deep into the subject, I am now joined by Mr. Shubhamoy Bhattacharjee, economic analyst. Mr. Bhattacharjee, welcome to Akashvani. Happy to be here. India's digital trade is an important component of the Indian economy, and the revenue from IT ecosystem of India exceeds $280 billion and exports of $225 billion in the financial year 2024-25. And the sector also employs more than 60 lakh people. So at the very outset, Mr. Bhattacharjee, can you take us back to the reforms and policies which have helped in strengthening the digital trade ecosystem and achieving such big numbers? That's an interesting thing to talk about. So this has not happened overnight. It has taken time to develop. There are lots of things that we have managed to do. The big thing that we have done is first of all, is obviously the development of the UPI infrastructure. And that is a very big thing. Simultaneously, what has also happened is that over the years, so there are two parts to it. One is the UPI infrastructure, and which creates a very interesting export commodity for us. But the larger story, even beyond that and even earlier on, is the fact that India, since for quite some decades, has been pushing services trade in digital issues. So what has happened is that some of the brightest stars in the digital trade have been making inroads into the global market using two things. One is an exceptionally good, talented workforce. The other is the fact that India has had a very comfortable lead in being able to speak English. And the third thing is that India has been able to provide what I should say a very stable tax and a fiscal policy especially in the last few years in the digital trade. As a result, India has been able to take a pole position in this situation. Allied to it, recently what we have done is that we have written very interesting free trade agreements. We have written a very robust legal framework, which is at the top of it, which is the Digital Personal Data Protection Act up to 2023. And we have essentially given foreign investors the confidence that this is the market and this is the center from where a lot of digital good work can be worked out. And sum total of it is that we have the pole position in digital trade. Mr. Bhattacharjee, your answer brings me to my next question, and you spoke about the free trade agreements and the free trade agreements with UAE, UK and the European Union, each one of which includes a digital trade chapter as a key component. In these agreements, India has effectively safeguarded its interests while securing the market access. So could you precisely talk about the digital trade chapter which is being stated as the key component? So as I can see now, what is the digital process in which India is very keen on
basically is about a condition where the biggest advantage can be drawn by the largest number of people. So on e-commerce, for instance, India has supported the work program of WTO, but the critical issues are addressing problems of digital divide among countries, securing and ramping up the digital infrastructure, and the skills and the regulatory frameworks to ensure that all countries, not just the developed countries, but developing countries, and especially the least developed countries, have the tools to build their own digital futures. Now, this is something which is very important because as of now, despite, it being almost obvious, there has been no consensus among the membership. So this is something that while India supports it, but the issue about digital tax, the issue about work program on e-commerce, these will all have to be taken up at the next meeting of the General Council in Geneva. So, Mr. Bhattacharya, initially you had also spoken about the Digital Personal Data Protection Act 2023, which has established a strong data privacy framework. So, in your opinion, how has it helped in giving a boost to digital trade? Digital trade needs, as we said, a widespread offer across countries. It needs us to be able to reach out across regions. And one of the most important part of the digital phenomena is that digital trade would depend on inter-country coordination. Now, if we talk about the free trade agreements that we are signing, one of the important things that's happening there is, while the government of India is firmly committed to expanding digital trade partnerships, and towards that it has already concluded trade agreements with several countries. But the big thing is that more and more countries need to come on the same sort of a understanding. So essentially, let me put it this way. As we just discussed at the WTO, the work program on e-commerce has not moved, and it will wait for the next meeting of the General Council. Meanwhile, there is dissonances from other places. So what India is now trying is to develop digital trade partnerships one-to-one with countries. So we have already got with 3 free trade agreements, those with which we can mention, which is the one with the United Arab Emirates, the United Kingdom, and the European Union, and each of which includes a digital trade chapter as a key component. So you can see that digital trade will be developed globally, the model the way India is doing, in which each country signs deal with the other country. And I suppose in the absence of a global harmonized standard, that is the best way to go about it. Also, Mr. Bhattacharya, now I would like to delve a little onto the UPI payment system also. So we have spoken about the global digital trade ties and global digital trade ecosystem. Now I would like to divert our discussion to UPI, which is now live in over 8 countries, which includes UAE, Singapore, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, France, Mauritius, and Qatar. And it has positioned India as a global leader in digital payments. So, in your opinion, how is the growing international adoption of UPI boosting the Indian economy, and how is it contributing towards the Indian economy? What we are finding is that the UPI, when we started out, was as an experiment. But now it has developed into a very robust movement and a very more robust payment system. So across modes, India now, for instance, works on, like people, lots of parts of India, people do not use cash. They simply use UPI, the QR code. That becomes the most easily obtainable, the most easily recognizable thing in India. So like even the poorest person understands how to travel, how to use the QR code as part of their work styles. And that's a significant change, because instead of using cash, people understand that this is how it should be done. That's a very remarkable development, because it has helped us to create an ecosystem where people are not, what I should say, hampered by the fact that they have to use cash or they have to keep
lots of other things that goes along with it to be able to use their business, they can directly straightforward work into the money economy by just using UPI. So it facilitates, especially for the poorest people, a huge opportunity which would not have been possible otherwise. Very lucid explanation, Mr. Bhattacharya. In fact, I would also like to inform the listeners that UPI has emerged as world's largest real-time retail payment system and accounting for 81% of retail digital payments in the financial year 2024-25. So I would like to understand the factors that are responsible for driving this change. So the UPI movement that happened did not happen by accident, and it happened because of the government's steadfast, what I should say, concentration and focus on developing this movement. So the first stage, what happened is everybody, all Indian, was given an Aadhaar identity. Now that itself is a very big thing. 1.4 billion people got an identity, got an Aadhaar identity. At the next stage, as you would remember, there was this system of what we call the Jan Dhan's bank account movement, where every adult Indian got a bank account, and those bank accounts were linked to the Aadhaar. So a connectivity system was established between the bank account and people's identity without having to go in for too many complicated ways of recognizing who's dealing with the bank. At the third level, banks themselves got linked to each other using the Aadhaar bridge. So all transactions among banks with respect to individuals got mediated through the Aadhaar system. The fourth system was that the Aadhaar, that this allowed the bank infrastructure to be linked to all sorts of business, right from the smallest vendor to the biggest enterprises. Everybody was connected with banks, so people didn't have to create their own bridge, their own networks to be able to transact their finances with a bank using a very specific system created by that bank. It was a universal system created across India, and the example of that is the QR code. When we make a payment on the QR code, when anybody makes a payment on the QR code, they don't really have to think that there has to be a separate bank account, there has to be a separate identity. It is all linked under a very common system of operation. So there's not even any need for anybody to press a number. Even that digital literacy is that part, even that has been taken care of by simply what is called visual literacy. And this powerful combination has allowed us to create a payments network which is now being sought to be replicated in lots of countries across the world. Mr. Bhattacharya, since we are progressing towards the end, I would like to have a closing comments on again the global digital trade ties. So are there any further probable countries with which India is in pipeline of finalizing any such FTA, and where this particular digital trade has been kept in mind? Well, surprisingly, our interim trade agreement with USA includes the digital issue. You'll be surprised to know, and Akashvani listeners will actually often be pleased to know, that India's digital infrastructure is actually more sophisticated than many countries. In fact, I should say all countries. As a result, there is lots that many countries have to sort of, ramp up their identity systems to be able to do business on the UPI platform with India. For instance, Indians, when they go abroad, they can't just use a QR code to make the payment. So all of these things have become very, very... So India is keen, but at the same time, what is also happening is that India is having to export its digital network, its digital infrastructure, its knowledge, skill set to the other countries. Thank you so much, Mr. Bhattacharya, for sparing your valuable time and giving us such deep insight on India's expanding global digital trade ties. Thank you very much. You are listening to a discussion on India's expanding global digital trade ties. The participants were Shubhamoy Bhattacharya, economic analyst, and Diksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel,
News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044. Hei Akashvani Lunglei ni chadun. Kan soi fo chin angin hanti lai emok kan la soi zel do na wang te po ani ang jotiro chadun hun hi kan soi chin ang khanin lapakhat la in ang mga artisan ve tena ansak ania ansak dan style emo an musical dan te po ai ang lo a china ni kan ti fo kha chu angai thatu te lamchan kha han ni ta setro ole he zan hun te po tlemina lo re vele ta dewa amero chu kwa te po lum chau chan vele ta viaw muya chu wang chon zan men te po kha nuam chau chan vele to viaw in garenga a chen te chu ram ria na a te mo jin ko nga te mo po lo ni se hon min lo man pui garenga in tan he hun he kan hlan ni ro se o ole kan lama saber atan swan ka lau lo wang ti la kan ngai thla anga he la hi en lal shat pui hian ron sama sanga chumi do ta chon nen si zo than mo is sakhi kan ngai thla chon zom do nya Hãy subscribe
an pai nu kha an po som zikrin lailil hi akhuna ma se athunga pathian lo ong si chandam la ro pui achang pathian rin tu chu say bắc nay bu ka hao la pang khi năm nay vui ka lao hẹp lo ka ne lo ong sen tiam tu kha tu na po pa lai ren ani rai trong val hậu te mấy puya an pai nuin mấy pui thil ti thek na ti dai tu alon om an sam sai pakhat po merim nam lo pasia min makka than chua ani oh hallelujah say bắc nay bu ka hao pang khi năm nay vui ka lao hẹp lo ka ne lo ong sen tiam tu kha tu na po pa lai ren ani along đi ren si sa say bắc nay bu ka hao la pang khi năm nay vui ka lao hẹp lo ka ne lo ong sen tiam tu kha tu na po pa lai ren ani sa say bắc nay bu ka hao la pang khi năm nay vui ka lao hẹp lo ka ne lo ong sen tiam tu kha tu na po pa lai ren ani Olezan in chadun huna kan ngai thak masak ber kha ka lau lowang ti hla ani a aron samasatu kha enlal shat pui ani a adot le mi kha nansi zo than moi ni ve thongani akashvani lunglei dar soma hian parliament question ar deli mi kan la chongang ole chadun hu lo man chun zomila adot le tan swan lalar mai kan schedule forin karinga cross hill ti theina ti hlani atle ma chang thar deu chuanin vanal sailovana asakhi kan schedule in karinga amar zutle marwal u deu te han ti la te chuanin TBC lal biak zawa sakhi kan schedule zok te po in karinga ti chuanin cross hill ti theina ti hlahi vanal sailovana ron samasa anga chumi zo chuan TBC lal biak zawa yan ron savet chun aron sav chun zomang ilongai thlangu chun enga
phân dòng nghe cả lấy đi khắp hàng ao rồi rung cả kia chu van khua lệ tui o min chan tir tu ka fat ning long si ka chan dam tu bel ong nan zo ka tum po cross thun enga ka kal ngam lo ka chut mun rim tlang san ber po min the chim san tuar na rum ne min fan zong ne ka lai ri khap hang ao rol rum ka fiat chu wan khua le tui o min chan tir tu ka fat ning long si ka chan dam tu phal silo chui lâu cor fuan min sin tira lo nanun to lovin min thua ka bong bil tur a phal silo min fan zong nge ka lai ri khap hang ao tir tu ka fat ning long si ka chan dam tu oi kirin cross lam ikhirang shing nun khovel su na oi ten chon ram ring mileng ram zong sol na ram ren a om silo min fan zong nge ka lai ri khap hang ao rol rum ka fiat chu wan khua le tui o min chan tir tu ka fat ning long si ka chan dam tu cross hill ti theina ti tharon samasatu ka vanal sailova ania do tami kha tbc lal byak zawa ani akashvani lunglei nak tuk jing daruk le minute som fangnare moi hona mizoram sinot choir longtlai not bia zai pol le bungmon ko shan zai pol te tharem kan ngai thanga daruk le minute somli panga dam le thrisel na huna mobile phone in no pang angung dan chungchang Cecilia H zorin sangi tutor school of nursing Christian hospital ser kona min aron soyang ole chedun hun longman sun zomila dot le tan chuan ka thlir bang don lo ti hla le rat luin ron samasa anga adot le baby lerin moi na ron saang dam lai shin nun tia ram lung du len na tangai zua le o ka thir bang lo tiram lo le angel bar ken le satuan lam moi sa in an le nge o ka thir bang lo ka ram hun tu kan sa te len na ram ko pui moi kan tu fakin he min nan zae le shom na ten tip hak lo
clear bang don lo ti laron sama satu te kha le ruat ron satu te kha le ruat lo I le baby le rin boy te ani ole hey dar kwale minute somnga panga nia minute nga cha kan lo nei le tareng maya la pakhat sia hi kan ngai thak thei mel to eng poni sala li swan he na ti hla baby mal som twangin aron sang One
Lali suwa niya ti laron sa tuka baby malsom tluangi ni. Ole chu ti zong chu zanina chadun hon kan man the chu halo ni le ta a Akashvani Lunglei achanga puan so ani. Nagtuk zing dar sari akan dar thalang hun kan manga dar sari le minute som panga meiche o a zoram chani zai kan ngai thave thunga zing dar sari le achan via chan chin thar mizo chunga puan ai zola mi kan la chongang. Dar sari le minute som lia ai non hun mangin leng zem le leng long in than te kan ngai thaang. Hei hi Akashvani Lunglei ni Tuna changa hun rei lo te dar so ma hian Parliament Question R Delhi mi kan la chongang. आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। क्वेश्चन नंबर 406 श्रीमान सुनीलाल घरासिया जी। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न संख्या 406। प्रश्न संख्या 406। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को वर्ष 2015 से 2025 के बीच राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के अंतर्गत वृक्षारोपण गतिविधियों में दर्ज कमी की जानकारी है? यदि हाँ, तो संबंधित कमी को दूर करने और मिशन के अंतर्गत वृक्षारोपण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? राज्यों को अपने वन आवरण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने में 16वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए महत्व की विशिष्ट भूमिका क्या है? क्या मंत्रालय ने मिशन के डिजाइन में कार्बन पृथक्करण निगरानी को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री कीर्तिवर्धन सिंह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री। The answer is laid on the table of the house. The first supplementary श्रीमान सुनीलाल घरासिया जी। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ आपको कि लॉटरी में इस सेशन में पहला नंबर आया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में वनीकरण के अंतर्गत शामिल भूमि हेक्टरों में विवरण क्या है? पिछले 5 वर्षों में मिशन के अंतर्गत कितने हेक्टर क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र का पुनर्स्थापन किया गया है? मिशन के अंतर्गत जिन राज्यों में वृक्षारोपण कवरेज में सर्वाधिक सुधार हुआ है, तत्संबंधी विवरण तथा उसकी सफलता के कारक क्या हैं? राजस्थान में सूखारोधी और देशी प्रजातियों के उपयोग से वृक्षारोपण की सफलता दर में किस प्रकार सुधार हुआ है तथा राज्य स्तर पर वृक्षारोपण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रतिक्रियाओं को किस प्रकार सरल और सुव्यवस्थित किया गया है? ऑनरेबल मिनिस्टर। धन्यवाद सर। माननीय सदस्य ने एक सवाल में काफी सारे पॉइंट्स इशू रखे हैं सर, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा सर। माननीय सदस्य ने ये जानना चाहे कि राजस्थान में हरित भारत मिशन के अंतर्गत वनीकरण में कितना एकड़, कितने एरिया भूमि में सैपलिंग्स या प्लांटेशन किए गए हैं सर। ये ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत हम लोग अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज लेते हैं और रीजन वाइज जहाँ जहाँ जो इंडिजिनस सैपलिंग्स की जरूरत है प्लांट से, उसी को वहाँ पे कोशिश करते हैं कि वहीं लगाई जाए। उससे उनका सर्वाइवल भी बढ़ता है और देख रेख में भी आसानी रहती है। सर माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में सर मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान को 2.77 करोड़ यहाँ फंड मिले थे सर, और उसके अंतर्गत उसके साथ साथ कैंपा फंड और नाबार्ड फंड के कन्वर्जेंस के साथ राजस्थान में 61,056 हेक्टेयर में ये प्लांटेशन किया गया है, वनीकरण किया गया है।
और इसमें अरावली लैंडस्केप रेस्टोरेशन भी है। और उसके साथ जहां मैंने ये भी कोशिश किया था कि माननीय सदस्य जी के गृह क्षेत्र से भी देख लें कि वहां पता करें कि कितना वहां पे हुआ है। सो माननीय सदस्य के गृह क्षेत्र डूंगरपुर में 3250 हेक्टेयर्स में भी ये प्लांटेशन किया गया सर। माननीय सदस्य जी का एक दूसरा सवाल था कि कितने डिग्रेडेड फॉरेस्ट क्षतिग्रस्त वन में कितना हेक्टेयर में काम किया गया है इस प्रोग्राम के तहत। सर वहाँ पे कैंपो स्टेट फंडेड प्रोग्राम को लेकर और नाबार्ड को लेकर 2021 से 24 तक 3.78 लाख हेक्टेयर्स में प्लांटेशन ड्राइव की गई है सर। और इसमें कोशिश यही रही है कि जो ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट्स हैं, नेटिव स्पीशीज हैं, और उन्हीं को वहाँ पे उन्हीं का प्लांटेशन किया जाए। सर माननीय सदस्य ये भी जानना चाहते थे कि इस प्लान की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम लिए हैं सर। सर मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरा जो अप्रूवल का प्रोसेस है, जिस तरह स्टेट से प्लान आता है और उसका अप्रूव करने का जो तरीका होता है उसको आसान किया गया है और उसमें और तेजी लाई गई है। सो इट हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइंड बाय द मिनिस्ट्री टू accelerate the plantation activities at state level. So under the National Mission for Green India, state and union territories वो अपना पर्सपेक्टिव प्लान सबमिट करते हैं और एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन भी सबमिट करते हैं। सर ये जो हमारे ग्रीन इंडिया मिशन का जो डायरेक्टरेट है ये और इसके साथ साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको अप्रूव करता है। उसके बाद सर ये फंड सैंक्शन किए जाते हैं। सर ये फंड सैंक्शन करने का रेशियो भी उसको ठीक किया गया सर। सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90-10 के रेशियो में फंड्स दिए जाते हैं, यानी कि 90% केंद्र सरकार का होता है और 10% राज्य सरकार का होता है। सर बाकी स्टेट्स के लिए 60-40 में दिया जाता है रेशियो में, और जहां तक यूनियन टेरिटरीज है उसमें 100% केंद्र का फंड होता है। सर मुख्य बात इसमें यह है कि एक सिंगल नोडल एजेंसी जिसको स्पर्श मॉड्यूल कहा गया है वो स्थापित की गई है, और जो फंड फ्लो सेंटर से स्टेट ट्रेजरी को जाता है उसके बाद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फिर स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी को जाता है। एंड फाइनली सर द फंड्स गो टू द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी एंड दीज आर एट द विलेज एंड पंचायत लेवल। सर दे गो थ्रू अ सिंगल नोडल एजेंसी एंड द स्पर्श मॉड्यूल। एंड इससे फायदा ये होता है सर कि इससे रियल टाइम फंड भी रिलीज होते हैं, मॉनिटरिंग भी अच्छी हो जाती है और इम्प्लीमेंटेशन में भी एफिशिएंसी आ जाती है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुनीलाल गरासिया जी। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी का जो जवाब दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न 16वां वित्त आयोग के कर वितरण सूत्र में वन एवं पारिस्थितिकी संकेतों को कितने अनुपात में शामिल किया गया है? राज्यों में वनीकरण गतिविधियों को सुदृढ़ करने में इस बढ़े हुए वित्तीय समर्थन का क्या योगदान रहा है? मिशन के अंतर्गत निधियों के प्रभावी उपयोग की सुनिश्चित करने के लिए कौन से संस्थागत तंत्र विकसित किए गए हैं? राजस्थान को 16वें वित्त आयोग के वन एवं पारिस्थितिकी मानदंड के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का विवरण क्या है? राजस्थान में इन निधियों का उपयोग विशेष रूप से जनजाति जिलों और मरुस्थलीय जिलों में वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ाने के लिए किस प्रकार कर रहे हैं? उसके साथ साथ हमारे राजस्थान और कुछ हरियाणा और गुजरात से अरावली की पहाड़ियों की श्रृंखला है जो प्राकृतिक रूप से राजस्थान को और मानसून के कई आधार उसके साथ डिपेंड करते हैं। अभी अरावली श्रृंखला में कई खनन के कारण वहां का जो फॉरेस्ट जो है उस पर नुकसान बहुत हुआ है। मैं मंत्री जी जानकारी चाहूंगा कि इस अरावली श्रृंखला को जो नुकसान पहुंचाया है उसके बारे में भी मुझे जानकारी दें और क्या उपाय इसके रोकने के लिए करेंगे, ये आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। धन्यवाद। Honorable Minister, you be brief, sir. You need not explain everything. You need not answer to every word of him. थैंक यू सर, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद सर। माननीय सदस्य जी ने एक सवाल में जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे सवाल पूछे सर और जानकारी चाहते सर। सर मेरी कोशिश रहेगी कि जितना मैं इस प्रश्न से संबंधित सवाल है और जहां तक है सारे सवाल संबंधित है सर। जहां तक मुझे याद है सर, माननीय सदस्य जी ने ये पूछा था कि जो वेटेज, आपका सवाल था वेटेज पे कि कितना % वेटेज जो 16 फाइनेंस कमीशन में है उसमें किया गया सर। सर वेटेज तो 10% ही रखा गया सर, लेकिन उसमें सुधार लाया गया सर। सुधार इसलिए लाए गए हैं क्योंकि अभी तक केवल जो हमारे फॉरेस्ट थे केवल उन्हीं के हिसाब से वेटेज मिलता था। अब जो डिग्रेडेड लैंड है या ओपन फॉरेस्ट एरिया है या जहां कम डेंसिटी पेड़ों की, उनको वेटेज नहीं मिलता था। तो इसलिए स्टेट्स को कोई इंसेंटिव नहीं रहता था कि ऐसे डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड या ओपन फॉरेस्ट लैंड को भी फॉरेस्ट की शक्ल में उसको डेवलप करें सर। इसलिए सुधार लाया गया है
कि अब ये जो इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर जो असेसमेंट होगा सर, ये बायनियल मतलब 2 साल पे वैल्यूएशन तो होगा ही, और सर इसमें जो डिग्रेडेड और लो डेंसिटी फॉरेस्ट है जिनका रेस्टोरेशन के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सर, उसका भी उस पे भी उसको वो वेटेज मिलेगा। और इसके साथ साथ सर जो फाइनेंस 16 फाइनेंस कमीशन की आपने बात की थी सर, उसमें जो मुख्य चेंज लाया गया सर, उसमें ये यही है कि बोथ फॉरेस्ट एरिया एंड इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर विल बी इंक्लूडेड एंड ओपन फॉरेस्ट एंड विल बी इनकॉर्पोरेटेड, एक्सपैंडिंग द स्कोप बियॉन्ड डेंस फॉरेस्ट एंड ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टैटिक मेजर to a dynamic performance-based framework will be established, and it will balance the dense and the open forest. Sir, इसमें जो हमारे फॉरेस्ट स्टेट हैं उनका भी उतना ही फायदा मिलेगा, लेकिन स्टेट्स को एक इंसेंटिव मिलेगा कि अपने फॉरेस्ट का वो क्वालिटी बढ़ाएं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद तिवारी जी। मानवर, ये राजस्थान से जुड़ा प्रश्न है। मैं मंत्री जी के विस्तृत जवाब के बाद 2 बातें कहना चाहता हूं। क्या वो बता सकते हैं कि ये जो प्लांटेशन होता है उसमें सर्वाइवल की परसेंटेज क्या है राजस्थान में खास तौर से? मेरी जानकारी के अनुसार ये छुट्टा जानवर, आवारा जानवर उनको चर रहे हैं और उनको पानी न मिलने की वजह से वो सूख रहे हैं, उसमें बड़े हिस्से में हो रहे हैं। एक मेरी चिंता, और दूसरा एक नया कानून लाए थे जिसमें अरावली को एक लंबी दूरी तक छूट दी जा रही थी खनन माफियाओं। क्या आश्वस्त करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जैसी चिंता जताई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई है। मैं बधाई देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि अगर पर्यावरण नहीं रहा तो विश्व का हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो पर्यावरण को किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि सबकी चिंता को समझते हुए पहला जो मैंने पूछा है उसकी दर क्या है, और दूसरी पूरी तरह अरावली को मुक्त किया जाएगा, वहाँ प्लांटेशन लगाए जाएंगे। मिनिस्टर सर, जहाँ तक सर्वाइवल रेट का बात है सर, हम लोग एक मोटा 60 to 70% प्लांटेशन में सर्वाइवल रेट मान के चलते हैं सर। और इसका सैटेलाइट इमेजरी द्वारा हमारा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, वो इसको हर 2 साल पे इसका असेसमेंट करता है, और हम लोग सैटेलाइट इमेजरी, GIS टेक्निक, उसके साथ साथ ग्राउंड वेरिफिकेशन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ये देखने के लिए कि जो हमारे प्लांटेशन लगाए गए हैं उसमें कितनी सर्वाइवल है। सर, जहाँ तक माननीय सदस्य जी ने ये कंसर्न जाहिर किया है कि एनवायरनमेंट के लिए फॉरेस्ट जरूरी है, और क्या हल रहा है सर, मैं आपके सामने हाउस में पेश करना चाहता हूँ जो हमारी ISFR की रिपोर्ट है सर, जो 23 की है। इसमें ये दिखाया गया है कि आज हमारा जो फॉरेस्ट और ट्री कवर हमारे देश का वो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है। ये हमारे देश के पूरे जोग्राफिकल एरिया का करीब 25% कवर करता है सर। ये 2021 के असेसमेंट से सर इसमें बढ़ोतरी हुई है 1,445 स्क्वायर किलोमीटर की। सर, इससे साथ साथ जाहिर है कि सर हमारी सरकार पूरी तरह इस पे ये फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए सारे प्रयास कर रही है सर, और हर तरह के इसमें जितने भी मिशन हैं, जितने भी हमारे ये स्टेट प्रोग्राम और नेशनल प्रोग्राम्स हैं सर, ये सब एक कन्वर्जेंट ढंग से इस पे कर रहे हैं सर काम। सर, जहाँ तक अरावली की बात की है सर, ये अंडर अरावली लैंडस्केप रेस्टोरेशन एंड अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, सर राजस्थान की आपने बात की थी सर, द स्टेट ऑफ राजस्थान हैज टेकन अप फॉरेस्टेशन एंड इको रेस्टोरेशन ऑन, जैसा कि मैंने बताया, 61,056 हेक्टेयर पिछले 2024 से 26 है सर। क्योंकि ये स्पेसिफिक माननीय सदस्य जी का सवाल है सर, तो इन्फॉर्मेशन मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ सर, ये क्योंकि इससे नहीं है। धन्यवाद सर। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान ब्रिजलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। एक वृक्ष होता है तराई एरिया में, साल, साखू, और बॉटनिकल नेम सोरिया रोबस्टा। ये जो पेड़ है इसके जो सीड्स होते हैं उनकी वाइबिलिटी मात्र 5-6 दिन की होती है। ड्रॉप हुआ, अगर जमीन नहीं मिला तो नहीं जमेगा। तराई एरिया में बहुत पेड़ थे इसके, जंगल था, और बरसात में जब पहली दूसरी रेन होती है तो एक किस्म का इंडियन ट्रफल निकलता है जो बहुत महंगा बिकता है, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब में साल के तमाम जंगल थे। खासकर उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल से इसको एक सिस्टम था, बनटांगिया लोग थे, वो वृक्ष लगाते थे, देखभाल करते थे, बीच में खेती करते थे, और फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण वृक्ष जिसके बारे में कहा जाता है लकड़ी के 100 वर्ष खड़ा, 100 वर्ष पड़ा, 100 वर्ष गड़ा, जो रेलवे स्लीपर्स वाले थे लकड़ी के, इसी के होते हैं। तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस अमूल्य चीज जो सोरिया रोबस्टा है, साल है, इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर।
Sir, our government takes up various programs for the afforestation of our country, increasing the forest cover, increasing the tree cover, and the quality, improving the quality of the density of a forest. Sir, जहाँ तक particular salt tree की बात की है, सर माननीय सदस्य जी ने एकदम सही कहा सर, ये बहुत पुराना अपना प्रजाति है और इसके लिए वाकई ये बहुत ही एक हार्डी स्पीशीज होता है सर। जहाँ पे ये खास करके हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में पाया जाता है, तो इसके लिए हमारे जो जंगल विभाग है ये अपने अफॉरेस्टेशन ड्राइव्स में ये सारे इंडिजिनस प्लांट्स को लेके चलते हैं। केवल मोनोकल्चर हम लोगों ने खत्म किया है सर, जिसमें हमारे बायोडाइवर्सिटी को भी फायदा उठ सके। और जब ये प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं, अफॉरेस्टेशन ड्राइव्स ली जाती हैं, तो उस एरिया के जो भी इंडिजिनस प्लांट है, चाहे वो साखू हो, साल हो, बरगद हो, नीम, पीपल वगैरह वगैरह, ये सब लेके चला जाता है। और इसलिए इसी तरह हम लोग ये सारी प्रजातियों के संरक्षण के लिए उनको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी। धन्यवाद सर। डिस्पाइट अडॉप्टिंग a bottom up approach in plantation and afforestation programs, reports indicate limited success in effectively engaging local communities, which often results in poor maintenance of plantation, low survival rates, and minimal improvement in livelihoods of beneficiaries. In this context, may the Minister explain that the government has assessed any reasons for inadequate community participation, and what steps are being taken to strengthen the local ownership provide, building the improved long-term sustainability practices. Sir, again I would like to add about Ek Ped Maa Ke Naam. This was our program, this government's program. So what is the status of the Ek Ped Maa Ke Naam? Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, under the various programs of our government, sir, the local communities are encouraged to take part in afforestation programs, and there are various awareness also programs which are taken up by the government to sensitize the local people and the community towards the importance of the well-being of our forest and our ecosystem. Sir, Ek Ped Maa Ke Naam is one such initiative, and it was launched on the World Environment Day in 2024, and its objective was, sir, to transform tree plantation into a people's movement by symbolically dedicating each tree to one's mother. So this creates an emotional and cultural connect with the environment protection and ensures the longevity and survival of the plant. Sir, ये initiative भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ से aligned है, and it also promotes sustainable lifestyle and climate and people-led climate action. सर, जहाँ तक इस कैंपेन की बात है सर, मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो डेटा है वो मेरी लाइफ पोर्टल पे 24 आवर्स रहता है सर। और एज पर द डेटा अवेलेबल ऑन दिस मेरी लाइफ पोर्टल, ओवर 113.32 crore saplings have been planted across the country. This campaign has witnessed wide participation from government agencies, educational institutes, local bodies and citizens sir. And ये plantation activity है सर, वो रूरल एरिया में भी की गई है और अर्बन एरिया में भी, नगर वन योजना वगैरह में भी ये एक्टिविटीज की गई है सर। धन्यवाद। Now question number 407 श्रीमती संगीता यादव जी। क्वेश्चन नंबर 407। प्रश्न संख्या 407। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में जैव विविधता से संबंधित कार्यकलापों के माध्यम से जैव विविधता संबंधी जागरूकता को बढ़ावा दे रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और पिछले 3 वर्षों के दौरान इस दिशा में उठाए गए कदमों का उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री कीर्तिवर्धन सिंह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री। So a copy of the reply is laid on the table of the House. The first supplementary श्रीमती संगीता यादव जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहती हूँ कि देश में बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने और उसे संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार क्या रणनीति अपना रही है, और क्या उत्तर प्रदेश के लिए इसमें कुछ अलग से प्रयास किए जा रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, बायोडायवर्सिटी अवेयरनेस पूरे देश में फैलाने के लिए सर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार की सर। So the government of India promotes biodiversity awareness basically through the implementation of the Biodiversity Act of 2002, which was amended in 2023. So this act provides for national and state level strategies and action plans for awareness, conservation and also the sustainable use of बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सर। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए सर जमीनी स्तर से एजुकेशन प्रोग्राम्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स किए जाते हैं। और इसमें जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इसमें मुख्य इनिशिएटिव है स्कूल नर्सरी योजना,
एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, जिसको EIACP कहते हैं। और सर ये नेशनल म्यूजियम और नेशनल हिस्ट्री भी प्रोग्राम्स ये होल्ड करते हैं। सर कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज एट द पंचायत लेवल, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज एंड एंगेजमेंट ऑफ वेटलैंड मित्रस। सर ये इंकरेज करते हैं ग्रास रूट पार्टिसिपेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सर अवेयरनेस को और प्रमोट करने के लिए इसमें हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स भी होल्ड करते हैं। सर 22 मई हम लोगों का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंटरनेशनल डे है, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और वर्ल्ड वेटलैंड डे एंड वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी हम लोग होल्ड करते हैं। सर इसमें जहां तक बायोडाइवर्सिटी की बात है सर, ये बड़ा वाइड सब्जेक्ट है सर। इसमें इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ सब इंक्लूड होता है सर। इसमें इनिशिएटिव जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम, मिशन लाइफ, ये भी इसी का एक अंग है सर। धन्यवाद। सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती संगीता यादव जी। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत विश्व के मेगा डाइवर्स क्षेत्रों में से एक है, और अब तक यहाँ विश्व की लगभग ज्ञात जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें 7 से 8% जो वो इंडिया में ही मिलता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि इस मेगा बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार क्या कोई अथॉरिटी बनाने का प्रयास करेगी, और क्या राज्यों को भी इसमें शामिल करके इसको और वाइड लेवल पे लेके जाने का काम करेगी क्या? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर की गई है, और ये एक स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर है। सर 2003 में एस्टैब्लिश की गई थी अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। सर इसके हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है, और सर ये एक चेयरमैन के अंदर ये फंक्शन होता है सर। और इसके साथ साथ इसमें 16 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं विच आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, and there are also sir 5 non-government expert members. Sir, इसका जो function है, it is to advise central government on matters related to the conservation of biodiversity, sustainable use and fair equitable sharing of benefits, sir. So it also advises state governments in the selection of areas of biodiversity importance, and also advises the state biodiversity boards on any matter related to be implemented of the Biological Diversity Act, sir. जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आंसर कर दिया। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान निरंजन बिसी जी। Chairman, sir, I would like to know from Honorable Minister that whether the government proposes to introduce community-based biodiversity awareness program, eco-tourism initiative, and traditional knowledge documentation in Mahendragiri Hills Biodiversity Heritage Site of Gajapati District of Odisha, Gandhamardan Hills Heritage Site Biodiversity Heritage Site of Balangir and Bargarh District of Odisha, Gupteshwar Forest Biodiversity Heritage Site of Koraput District of Odisha, and Mandasaru Hill Biodiversity Heritage Site of Kandhamal District of Odisha, and whether the government will consider declaring this region as special heritage site of Odisha and the nation of our nation. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सदस्य जी ने बहुत स्पेसिफिक एरिया का सवाल पूछा है सर। सर उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि सर जो एरिया आपने पूछा है ओडिशा का, इसमें जो एरिया लिया गया है बायोडाइवर्सिटी के लिए वो आपका ये कंडामल में 528 हेक्टेयर दिया गया है, गजापति में 4250 हेक्टेयर लिया गया है, और गंधर्मर्दन हिल्स में 18,963 हेक्टेयर लिया गया है। कोरापुट में जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एरिया सर उसमें 350 हेक्टेयर लिया गया है, और ये सर ये ओडिशा का जो डेटा है सर, और जो डेटा आप चाहते हैं आपको सर प्रोवाइड किया जाए। धन्यवाद। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर मेहताब विश्वम कुलकर्णी जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। महाराष्ट्र में पुणे में 900 हेक्टेयर जगह पर रिजर्वेशन डाल दिया था बायोडाइवर्सिटी पार्क का, और इसको 25 साल हो गए। जिनकी लैंड थी प्राइवेट लैंड हाफ थी और हाफ गवर्नमेंट लैंड थी, जिनकी लैंड थी उनको कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउड नहीं किया, लेकिन वहां अब इलीगल कंस्ट्रक्शंस बन गए हैं, और बायोडाइवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन होते हुए भी अब वो लैंड बायोडाइवर्सिटी के लिए बची नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि इस बायोडाइवर्सिटी लैंड को संरक्षित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इनिशिएट कर सकती है ये विषय, और अर्बन डेवलपमेंट मतलब वो डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट कोई एक डिपार्टमेंट का नहीं हो सकता, ये शहरी लैंड है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास करेगी? ऑनरेबल मिनिस्टर।
सर जो कुछ भी हमारे सर एनवायरनमेंट के तहत जो कुछ भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो नोटिफाइड एरियाज हैं, सर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पर्याप्त सर लीगल सिस्टम और लॉज स्टेट लेवल पे भी है सर, और सेंट्रल लेवल पे भी है सर। माननीय सदस्य जी का सवाल एक अपने स्टेट को लेकर है सर, और मेरी आग्रह है कि इसको आप माननीय सदस्य जी का जो ये कंसर्न है इसको देखा भी जाएगा सर, और वैसे ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पर्याप्त लॉज और फ्रेमवर्क हैं कि इसको संरक्षित रखा जाए। फिफ्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी, प्लीज बी ब्रीफ प्लीज। धन्यवाद सर। सर ये कारपोरेट प्रोजेक्ट्स की वजह से जो जंगलों को काटा जा रहा है उससे जानवरों के प्राकृतिक आवास रहे हैं, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की वजह से जो वहाँ के आदिवासी हैं या किसान हैं उनका जीवन भी दुर्भर हो रहा है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जागरूकता अभियानों को नाम के बजाय चलाने की बजाय क्या इन पीड़ित किसानों को और आदिवासियों को आर्थिक मुआवजा देने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है? इसके साथ साथ जो जानवर जो आगे पीछे हो जाते हैं उस वजह से उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर माननीय सदस्य जी का इस सवाल से सर डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है सर, मगर फिर भी ये सही बात है सर कि जिस तरह हम लोग अपने वन जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उससे हमारे टाइगर पॉपुलेशन है, लेपर्ड है, एलिफेंट्स है, इनकी पॉपुलेशन, इनके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और साथ साथ क्योंकि हम लोगों की भी ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स भी धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं सर। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में हम लोग जो वहाँ के गांव के लोग होते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, उनको सेंसिटाइज करने के लिए कई सारे हम लोगों के प्रोग्राम चलते हैं सर, कि कैसे उनको बताया जाए कि कैसे इसमें ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम हो। उसके साथ साथ हम लोग ये रेडियो कॉलरिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ तक कि ये एलिफेंट्स हैं, और इस तरह के तमाम सारे अलग अलग प्रोग्राम्स उन क्षेत्रों में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है वहाँ पे सर हमारी सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में चल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 408 श्रीमान राइका कृष्णैया। क्वेश्चन नंबर 408। प्रश्न संख्या 408। क्या प्रधानमंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2023 से अब तक कितने युविका कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और इन कार्यक्रमों में छात्र भागीदारी, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र कवरेज और शामिल किए गए इसरो केंद्र का वर्षवार ब्यौरा क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए व्यापक विषयगत क्षेत्रों, व्यवहारिक मॉड्यूल और आउटरीच कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है, तथा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उभरते रुझानों के साथ उनके संरेखण का ब्यौरा क्या है? क्या युविका के भविष्य के संस्करणों में बृहत्तर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम के पैमाने, क्षेत्रीय पहुंच और संस्थागत साझेदारियों का विस्तार करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री। Sir, the answer is laid on the table of the House. The first supplementary, श्रीमान राइका कृष्णैया जी। Yuvika program is a very highly appreciable program. It will create among the students innovative ideas, research mentality at every age. Whether the department has undertaken any assessment participation level from Andhra Pradesh, Telangana and other states since 2023. The details of students' participation of the state, including year-wise and district-wise breakup. Any disparity in participation between urban area and rural area of Andhra Pradesh and Telangana. Chairman, sir, I am glad that the honourable member has put across a very important aspect of this question listed against his name. Yuvika, the acronym for Yuva Vigyan Karyakram, is in fact a unique program of its kind. I think for the first time government has conceptualized that and launched that in the year 2019, and it was, to be very frank, prompted by the advice of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has been right from day one emphasizing on providing equal opportunities, level playing field and optimum access to students, youngsters across the sections across the country. As the Honorable Member is saying, I think before that, for the benefit of the other members, let me also clarify that this program envisages including students from class 9. So it is a dedicated program meant for students of class 9 undergoing their studies or education in schools either under the central board or in the respective state board. Now, having said that, to address his concern, I think if he goes through the details of the program,
he would realize that this program is already designed in a fashion to give preference to rural students. So, the criteria of the eligibility that we have, first of all, let me clarify that we select 10 students minimum from each of the school and 8 students minimum from each of the school in the union territory, which means we have 28 states and 8 union territories. You can put together, that amounts to about total number of, say, 280 plus 64. So 10 from each state and 8 from each union territory. So it's a very kind of a democratic manner of selection. Even in the eligibility criteria, we have fixed 15% marks for the schools which fall under a notified panchayat. So the concern has been already addressed. Now his second query about the benefit which is accruing to Andhra Pradesh, as I said, it's been a very democratic exercise. We have so far, because this is an ongoing process, identified 7 centers across the country, out of which one is already there in Andhra Pradesh, in Sriharikota, the Stage Dhawan Space Center, and one in Hyderabad, which is the erstwhile Andhra Pradesh. And these centers, they encourage the students to reside there for 2 months, undergo specialized training to develop to acquaint them with the nuances of the space technology, also enable them to discover their internal or hidden aptitudes. And if you want, I can name the centers: the Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun; Vikram Sarabhai Center in Thiruvananthapuram, in Kerala; Satish Dhawan, as I already said, Andhra; UR in Karnataka; Space Application Center, Ahmedabad; National Remote Center, Hyderabad; Northeastern Space Application Center in Shillong; and 2 more we are going to include from this year, that is Mahendragiri in Tamil Nadu and Jodhpur in Rajasthan. And the course is conducted in the month of May, because that presumably is the vacation time. Similarly, with the instructions of the Honorable Prime Minister, we have also launched a couple of other programs for the adolescent students, following the principle of catch them young. For example, very recently after this, we also started a program called Vigyan Jyoti, which is a dedicated program for girls from class 9 to class 11. And not only this, we also then level up them at different stages as they grow up. For example, very recently we started a dedicated venture fund for space startups, which is called Antriksh Venture Fund, with a corpus of 1 crore rupees. Second supplementary, Sriman Vaigya Krishnaya ji. The Honorable Minister has given detailed information and it will be useful to the students. At the same time, the department proposed to collaborate with state education institutions in Andhra Pradesh to expand awareness and participation of Yuvaka. The details partnership with Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya and state board schools in the state. The department has to take a step to enhance outreach awareness and equitable selection students from undeserved region in both Telugu states. Also, provide detailed thereof, concluding the detailed students from government schools, tribal area and economically weaker section in the state that are adequately represented in the program. Honorable Minister. Chairman, sir, as the Honorable Member rightly pointed out, to add to what he says, as I already mentioned, the rural students are already being given preference. Also, schools which fall under central board or the state board, which means most of the government schools. And not only that, the selection process, because the selection process somewhere starts around the month of January or February, concludes by the end of April, and May we can then conduct this 1-month program. Now, the selection itself, and prior to the selection, in the pre-course or the pre-training period also is a kind of a formative period and includes all that the Honourable Member has expressed. For example, the 100% criteria for the selection of the students includes 10% quiz performance. So quiz competitions are conducted across the country. Then you have science fairs, the participation, and the level of participation of the students is also judged, for which 2% for schools participation, 5% if the science fair is at the district level, 10% if it is at the state level. Then we also conduct Olympiads at the district level, at the state level, at the national level, and accordingly 2, 4, 5% respectively the marks. Similarly also dedicated 5% for scouts and SS. So what I'm trying to say is that the selection criteria itself is very wholesome, keeping in mind and giving preference to the overall background of the student, his attributes,
and then channelizing him. And the results have been miraculous. If I can just take 1 minute, we started off this entire new space reforms program just about 5 or 6 years back with the opening up of the space department to the non-government players. We were just about dismal economy. Today we stand nearly $9 billion and the pace of our rise is so fast that the projections predict that by 2033 we might go up to $44 or $45 billion. And in the last 10-11 years, this gives me an opportunity just in a single sentence to point out that the total number of foreign satellites launched so far in India, ever since we began doing so, is 434, out of which 399, which means more than 90%, have been launched during the Modi regime. That is after 2014, just 11 years. So 90% of the foreign satellites, which have in turn yielded a tremendous amount of revenue for the state exchequer. For example, if the total revenue generated for the European satellites is 323 million euros, out of that 290 million euros have been generated over the last 10 years. And similarly, as far as the US currency is concerned, if $233 million were earned ever since the program began some 3-4 decades back, the total amount of $218 million was earned in just 1 decade. So you can understand the kind of emphasis the Modi government has given to the space department is virtually become a very important component of the overall India's economic growth, and is going to play a very important role when we envisage India 2047. Third supplementary, Shriman Niranj Dange ji. माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जो यूवी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका लाभ सीमित छात्रों तक ही पहुंच रहा है। अगर ऐसा है तो उसके क्या मुख्य कारक रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी के क्या कारण रहे हैं, और इसमें ऐसे इस कार्यक्रम में जो लाभान्वित विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कुल कितनी है, उसमें ग्रामीण और वंचित वर्गों के छात्रों को कितना समायोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जिनको लाभ मिला है, ऐसे छात्र जो हैं उन्हें बाद में विज्ञान एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में अगर उन्होंने कैरियर चुना है तो उसका ब्यौरा अगर सरकार के पास है तो वो मुझे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, मुझे आभार प्रकट करना आदरणीय सदस्य का, इन्होंने इसी विषय से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण जानकारियां साझी करने का अवसर दिया है। यदि पूछा जाए, जैसे उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के अभी तक कितने छात्रों को इसका लाभ पहुंचा है, तो मेरे पास आंकड़ा है 1320, और इसका कारण ये है सभापति महोदय कि अभी ये कार्यक्रम नया नया प्रारंभ हुआ है। अभी तक वी हैव रोल्ड आउट 5 एडिशंस। जैसे मैंने कहा कि 2019 में इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, 2 वर्ष हम इसको नहीं निभा पाए कोविड के कारण, सन 2020 और 21 में, और इस तरह से कुल मिलाकर के अभी तक केवल 5 अंक और 5 एडिशंस इसके हो पाए हैं। प्रति वर्ष 280 छात्र लिए जाते हैं राज्यों से, जैसे मैंने कहा कि 10 छात्र प्रत्येक राज्य से और 8 छात्र केंद्र शासित प्रदेश, यानी 64। तो कुल मिलाकर के 280 जमा 64 छात्र। और आगे चल करके, चूंकि हमारे पास अभी 7 केंद्र ऐसे हैं जो अंकित किए गए हैं जहां पर इसका प्रशिक्षण किया जाता है मई के मास में, और 2 हम और जोड़ रहे हैं महेंद्रगिरी तमिलनाडु में और जोधपुर राजस्थान में। धीरे धीरे इसकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि ग्रामीण छात्रों की क्या स्थिति है, तो जैसे मैंने पहले भी इस बात को उल्लेखित किया है कि इसको प्राथमिकता ही इसके जो चयन की प्रक्रिया है उसमें हमने 15% अंक उन छात्रों के लिए रखे हैं जो कि पंचायत स्तर के स्कूलों में अपना प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हो, तो उस चीज का पहले से ही ध्यान रखा गया है। 2023 में 350 छात्र रहे कुल, 2024 में भी 350, 2025 में भी 350। अब इसकी गति भी बढ़ रही है, संख्या भी बढ़ रही है, संस्थानों में भी नए संस्थान धीरे धीरे जुड़ने का कार्य हो रहा है। फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर बारमर जसवंत सिंह सलाम सिंह जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। वैसे तो मंत्री जी ने बताया है कि ये जो यूवी का प्रोग्राम है वो समर में मई के महीने में चलाया जाता है। फिर भी मेरा थोड़ा एक क्वेरी है कि व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन of each UV program edition, and how is the schedule structure between classroom teachings, hands-on projects and industry visits? Thank you, sir. Honourable Minister. I think जैसा कि सभापति महोदय जैसे सदस्य ने पूछा, मैं पहले भी उल्लेखित कर चुका हूं, ये 1 महीने का कार्यक्रम रहता है जब स्कूलों में छुट्टियां हुआ करती है अक्सर कर, खासतौर से केंद्रीय विद्यालयों में, और उस दौरान इन बच्चों को ये जो हमने अंकित किए हैं 7 केंद्र
7 संस्थान जिनमें 2 इस वर्ष हम जोड़ रहे हैं, वहां पर उन्हें रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाता है। वो वहां जाकर के रहते हैं, वहां की प्रयोगशालाओं में उनका आना जाना रहता है, वैज्ञानिकों के साथ उठना बैठना रहता है, किस तरह के वहां प्रयोग चल रहे हैं उससे वो अपने आप को परिचित करवाते हैं। और इस तरह से कई बार उनको अपने अंदर की जिज्ञासा के माध्यम से अपने अंदर के एप्टीट्यूड का भी एहसास होता है। आगे जाकर के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो प्रेरित होकर के स्पेस को ही अपना प्रमुख विषय अध्ययन का बनाने की भी सोच सकते हैं, लेकिन क्या उनको स्पेस डिपार्टमेंट में उसके लिए नौकरी मिलेगी इसके आधार पर ऐसा नहीं रहता। हाँ, उनको एक प्रमाण पत्र अवश्य मिलता है, एक सर्टिफिकेशन उनको रहती है, जो definitely which adds to the profile of every youngster. 5th supplementary, Tirumadi Rajaji ji. Respected Chairman Sir, I would like to know whether there are any dedicated initiatives proposed to mentor young school girls and women to pursue a career in the space sector similar to programs administered by the Department of Biotechnology exclusively to promote women scientists. Thank you, sir. Chairman sir, I am glad the honorable member has asked that. One, of course, Yuvika doesn't make a gender discrimination. It's as much available to the girl students as much as the male students. Now, this is a part of a larger ecosystem which the government has sought to develop over the last 1 decade, which also includes a number of other programs dedicated to girls from different age groups. As I said, the Vigyan Jyoti begins at class 9 to 12. Then we have programs at the pre-graduate stage. We provide fellowships. That's called Wise Kiran program. And this government has been very sensitive, thoughtful in also introducing mid-career programs. Many of our young daughters, they give up their career midway for family reasons. They want to come back later in the life. Earlier on, there was no such provision. We have provided that too as well. So I think the host a lot of programs, and I would rather go one step further to say that NEP 2020, National Education Policy 2020, though not a part of this ministry, a part of the Education Ministry, is also a part of this larger ecosystem because it gives the student the choice to change over his subjects when he or she realizes that she has undergone the discovery of a different kind of a talent or knack or aptitude inside him. So a student is no longer a prisoner of the subjects chosen by his parents or his guardians. For example, a parent thinks that the child should become a doctor. It prompts him to choose medical subjects. He doesn't make it to a medical school. Then where does he go? He would end up doing BSc in biosciences, then MSc, then PhD. So all will be happening by default. It's no longer so. Suppose you wanted to become a doctor, you don't happen to, you can change over to space technology, which was not happening earlier. So there's a wider choice, as I said, there's a whole democratization of the education system and also a huge prioritization giving to the inherent skills and the inherent aptitudes and also allowing the liberty to the aptitude to evolve. Some of the adolescents begin to realize that they had a different aptitude. Like, for example, when you go to the film industry in Mumbai, everybody thinks I'm handsome enough to become a hero. But later on, they are made to realize that you could be only a script writer or just be a clapper boy. So it's like that. So I think the whole opening of this entire ecosystem for which Prime Minister Modi has been also encouraging a whole of government approach. Now question number 409, Trichy Shivaji. प्रश्न संख्या 409, क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पात्र खेलों का ब्यौरा क्या है? ख क्या ये सच है कि बीच वॉलीबॉल ऐसी नियुक्तियों के लिए पात्र नहीं है? ग क्या ये भी सच है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंतर्गत बीच वॉलीबॉल एक मान्यता प्राप्त खेल है? और घ यदि हाँ तो बीच वॉलीबॉल को ऐसी नियुक्तियों के लिए पात्र खेलों की सूची से बाहर रखने का क्या औचित्य है? Honorable Minister. रक्षा निखिल खड़ से युवा मामले और खेल राज्य मंत्री। चेयरमैन सर, उत्तर सभा के पटल पे रखा है। Now third supplementary, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। Sir, this question refers to the appointment of meritorious sports persons in government jobs. Sir, the present government in 2014 launched a scheme called TOPS, Target Olympics Podium Scheme. Since then, Asian Games, Commonwealth Games, and Olympics, only 13 people have been medal winners from India. Sir, as a chairperson of the Standing Committee on Sports and Youth Welfare, we had submitted a very specific proposal to adopt the Chinese model. The Chinese pick up the meritorious talents at the age of 8 and 9, and they take full charge of that person, whether boy or a girl,
in a school and the schools and sports centers are at the same place. Unfortunately, here we have got SAI, we've got centers of excellence, but the education is not a part of these centers. So, Honorable Minister, may I sort of request you to look into the proposals of the standing committee, and we'd like to know your response to that. Thank you, sir. Honorable Minister. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि हम स्कूल लेवल से स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो अभी रिसेंटली बजट में खेलो इंडिया मिशन के बारे में भी अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ है, जिसका यही मकसद है कि हम ग्रास रूट से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और खेलो भारत नीति और स्कूल एजुकेशन पॉलिसी के साथ उसको अलाइन करके स्कूल लेवल से हम स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके माध्यम से ये भी कोशिश की जा रही है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट्स स्कूल बने कि जहाँ पे हर स्कूल का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके उन बच्चों को एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले। उसके बाद स्टेट एक्सेलेंस सेंटर जो है केंद्र सरकार के भी और उसके साथ कई राज्यों में अपने अपने स्टेट ने भी वहाँ पे डेवलप किए हैं, तो वहाँ पे उन्हें स्पोर्ट्स का एक स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट कोचेस के लिए एक डेवलपमेंट प्लान वहाँ पे रहे कि जिसके माध्यम से सभी फैसिलिटी एथलीट्स को वहाँ पे मिले। और उसके बाद जो हमारे साई के सेंटर है वहाँ पे हमारे जितने भी नेशनल खिलाड़ी हैं उनका ट्रेनिंग किया जाता है। और इस मिशन के तहत हम भी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे खेलो इंडिया सेंटर जो हर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि जिसके माध्यम से ग्रास रूट तक हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर सकें। हाँ बढ़िया। बहुत सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। जय सोमनाथ सर, थैंक यू चेयरमैन सर। पहले तो आज मैं हनुमान दादा की जयंती उस पर आज सबको बधाई देता हूं सर। सर, खेलों के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पूरे देश में खेलो इंडिया के माध्यम से देश का युवा खेलों में उत्साह बढ़ाए, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रयत्नशील रहती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो स्पोर्ट्समैन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे वो जीत के आते हैं तो उनको सरकारी नौकरियां मिलती है, पीएसयू में भी नौकरी मिलती है, मगर प्राइवेट संस्थाओं में भी उसका जो लिमिटेड कंपनी है उसमें भी खेलों में जो नंबर लाते हैं उनके लिए नौकरी के लिए कोई आरक्षण की नीति है क्या? अगर है तो उसकी निगरानी की कोई व्यवस्था सरकार के पास है क्या? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि वैसी व्यवस्था प्राइवेट मतलब कंपनीज में वैसी व्यवस्था आज तक मतलब अभी तक नहीं है। वो उनके ऊपर डिपेंड है कि अगर उन्हें लेना है तो वो ले सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस मिशन खेलो इंडिया मिशन के तहत हम सभी प्राइवेट कंपनीज को भी इसमें ये मिशन में इन्वॉल्व करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने CSR फंड में से भी वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सके। जैसा कि गवर्नमेंट में जो जॉब के लिए जो DOPT की एक गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सभी मिनिस्ट्री में अलग अलग जॉब के क्राइटेरिया जहाँ पे रिजर्वेशन रखे गए हैं और रेलवे का रिजर्वेशन के क्राइटेरिया अलग है, डिफेंस के रिजर्वेशन के क्राइटेरिया अलग है, पर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हमारी तरफ से कोई उनके ऊपर रूल लागू नहीं है। फिफ्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर फौजिया खान जी। Thank you very much, sir. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister, has the Ministry established a periodic review to update the list of qualifying sports and criteria for meritorious appointments, ensuring that athletes and sportspersons from various disciplines, like for instance beach volleyball, which has received full national recognition and competitive infrastructure under Khelo India, are not denied opportunities in public employment? And what steps has the ministry taken to rectify the anomaly where proven national level performance does not translate into appointment benefits available to sportspersons and other recognized sports? मिनिस्टर। आदरणीय चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी, उन्होंने बीच वॉलीबॉल के बारे में पूछा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गेम्स
के माध्यम से बात हुई थी, क्योंकि उनका मतलब खेलो इंडिया का यही एक मिशन है कि ग्रास रूट तक हम स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ा सके। और जिस तरह से खेलो इंडिया का गेम्स का रिस्पांस देख के हमने कुछ एडिशन अलग अलग पिछले 2-3 साल में हमने शुरू किए, जैसे कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम आज शुरू है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम शुरू है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, और उसका एक माध्यम है कि खेलो इंडिया बीच गेम भी हमने पिछले 2 साल से शुरू किया है। और उसका यही मकसद है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए सब एडिशन अलग अलग शुरू की है। अभी तक बीच वॉलीबॉल जॉब के क्राइटेरिया में अभी तक नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि डीओपीटी ये लिस्ट फाइनल करती है कि कौन से गेम उन्हें जॉब के लिस्ट में इंक्लूड करने हैं या नहीं करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 410, श्रीमान अशोक राव शंकर राव चौहान जी। प्रश्न संख्या 410, क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ में समुद्री जीवित संसाधनों का आकलन और निगरानी कर रहा है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? विगत 3 वर्षों के दौरान मत्स्य संसाधनों और समुद्री जैव विविधता के आकलन के लिए किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षणों की संख्या कितनी है? क्या इन सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग सतत मत्स्य प्रबंधन और समुद्री संरक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और भारतीय जल क्षेत्र में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। Sir, the answer is laid on the table of the House. Third supplementary, Dr. Sasmit Patra ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. My specific query is on olive ridley turtles that come and nest off the coast of Odisha. Honorable Chairman, sir, through you, I'd like to ask the Minister that over the various years, over decades, historically, off the coast of Odisha, we have olive ridley turtles that come, they nest, they hatch, and along with their little children, they also again go back into the Bay of Bengal. It's a very beautiful sight to see. Now, over the years, because of trawlers, shipping vehicles, many of these olive ridley turtles, while swimming back from the coast of Odisha, get caught in the nets of these shipping vehicles, get caught in the propellers of these small trawlers and shipping vehicles and die. Some of them are also poached as they go back into the sea. So my specific question is, what is the ministry doing in terms of trying to protect them? Thank you. Honorable Minister. Chairman, sir, thank you, Honorable Member. He is a well-read person. Even though the question is not per se related to the fundamental question asked, and I could have ordinarily very easily skipped out of that, but I would like to try to respond to my friend to the best of my knowledge. I think precisely what you are saying is the concern not only on the shores of Odisha, but as much on the Arabian Sea, the Western Ghats as well. So that is why in 2026, very thoughtfully, as a part of the Deep Ocean Mission, and there again I have no hesitation to say that it was Prime Minister who announced the Deep Ocean Mission from the ramparts of Red Fort, not once but twice in his Independence Day address in 2023-2024. So as a part of that mission, we have set up something called CMLRE, which is Center for Marine Living Resources and Ecology. And that is a dedicated center meant to take care of precisely the concerns which the Honourable Member has expressed in this House today. It is supposed to be a designated national repository for deep sea organisms, fauna organisms. Fauna is more of the animal kind of organisms which he is mentioning, because he is right. There was no institutionalized safeguards both on the Eastern Ghats as well as the Western Ghats. And this center is a part of the Deep Ocean Mission which was launched by the Prime Minister, and it is being coordinated by our center at Kochi. Its mandate, broadly speaking, is the survey, assessment and monitoring of the marine life in deep seas, also to conduct research, to find ways of their preservation, and also to generate data as far as the fisheries are concerned, as far as the biodiversity hotspots are concerned, and also the genetic databases, because very soon we will be heading to that. And we have already launched another segment of it called Bhava Sagar, which is a designated biodiversity referral
center. So I'm glad that the honorable member has shared this very important information with this august house, because this subject, this part of the subject doesn't come up often for discussion. But this government has already, because in other words, this is, I think, the first time that we have started looking at our ocean resources. We have 11,000 kilometer long coastal area, perhaps one of the longest in the world. We are the only country who has an ocean called Indian Ocean. लेकिन वही सागर, वही महासागर, वही हिंद महासागर, कभी हमने उस अपार संपत्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया. पहली बार इन 10 वर्षों में ये प्रयास किया गया. धन्यवाद. डॉक्टर अजीत माधवराव कोपचेडे जी. जब से मंत्री जी को मैं जानना चाहता हूं कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने समुद्री सुरक्षा में बहुत बड़ा उस समय कार्य किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा समुद्री जीवित संसाधनों और उसकी सुरक्षा का हमेशा सोच रखते हैं. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जल क्षेत्र में समुद्री संरक्षण, समुद्री परिस्थिति का तंत्र के वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी सुदृढ़ता के लिए, उसके संरक्षण के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं? सभापति महोदय, इस प्रश्न का बहुत सारा भाग पिछले प्रश्न के उत्तर के साथ जुड़ा हुआ है. माननीय हमारे ऑनरेबल मेंबर पात्रा साहब ने भी जो पूछा था, द प्रिजर्वेशन ऑफ द मैरीन लाइफ ऑन द कोस्टल एरिया, उसी से ही जोड़ा है. लेकिन मैंने जैसे कहा कि पहली बार इस तरफ तवज्जो दी गई है इस सरकार की ओर से, और इतना ही नहीं, इन्होंने शोध की और बात की, क्योंकि उसका जिक्र पिछले प्रश्नों में नहीं आया था. अगले वर्ष हमारा जो डीप ओशन मिशन है उसके तहत एक डीप डाइविंग रहेगी. वी विल बी सेंडिंग आवर डाइवर्स अप टू depth of 6,000 meter, which is the maximum depth in the deep sea. और एक सुखद संजोग ये रहेगा कि अगले ही वर्ष हमारा गगनयान भी उड़ान भरने वाला है. In other words, we'll have one human being going into the space and one or more human beings going into the deep sea simultaneously same year. डॉक्टर अनिल सुखदेव राव पांडे जी. सर, महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में मत्स्य संवर्धन के लिए इसका क्या उपयोग होगा? ने उल्लेख किया पिछले प्रश्न के उत्तर में कि हिंद महासागर में भी, बंगाल की खाड़ी में भी, कुल मिलाकर के जितने भी हमारे तटवर्ती क्षेत्र हैं, हमारे लगभग 12 राज्य समुद्री तट पर बसते हैं, उन सबको इसका एक समान पर्याप्त लाभ मिलने वाला है. अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे. दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी. Hei hi AKASHVANI LUNGLEI ni tuna hian zandar som le minute somnga panga ni a vuin April ni ninga ni ta na kan hun voi ni na alo top ta naktuk April ni thum zir top ni jing daruka naktuk ta na kan hun voi khatna kan chan le ang apuang tu ar le ngil nei control room in charge larem rota silo kan hun min man pui tu te mutui mangcha ve kule. Jai Hind.